उनके पास है क्या? और अगर उनके पास कुछ जमीन है उसको भी इविक्ट किया जाए इस नाम पर, आपके पास ये है वो है। मेरी गुजारिश है सरकार की तरफ से एश्योरेंस मिले कि वो उनको इविक्ट ना करे, या जो भी इविक्ट करने की कोशिश कर ले उनको उस बारे में रोक करने की कोशिश हो। ये आपका सवाल आ गया। आगे स्पीकर सर, ये इन्होंने पॉलिसी के हवाले से बात करी है। जहां तक रूरल डेवलपमेंट PMAY का सवाल है, आपने कहा था कि जो आपको हमने बतौर जवाब में दे दिया कि लैंडलेस लोगों को हम किस तरह लैंड देते हैं, और इसमें सर ये है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनका काम ये होता है आइडेंटिफाई करना। वो जब सर्वे करते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं लैंडलेस को, वो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास चली जाती है टू आइडेंटिफाई किन किन के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पास लैंड उनके वालिदैन का होता है या उनके जो फोर फादर्स का होता है, उसकी इनहेरेंट लैंड जो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उसमें दिक्कत होती है। जो केसेस हम यहां से रिकमेंड करते हैं, बेशतर केसेस उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, और उन लोगों के केसेस स्टैंड रहते हैं जिनके पास जमीन अवेलेबल नहीं होती, उनको प्लॉट दिया जाता है 5 मरले का। जहां तक रूरल डेवलपमेंट का यही हम सवाल है। अभी PMAY 2 स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी बाकायदा स्कीम बनी है और सर्वे भी हुआ उसका। तकरीबन 5 लाख करीब जो लोगों का है उनका सर्वे हुआ है। अभी हम वी आर अवेटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सैंक्शन आई नहीं है। जो ही आ जाएगी कोशिश हम, उसके बाद जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज को कहा जाएगा कि आप अपने हिसाब से देखिए, जिन जिन के पास लैंड अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए लैंड अवेलेबल करवा जाए, जो रेवेन्यू की पॉलिसी हमारे पास है, और जिनके पास होगा उनको उसमें लाया जाएगा। ये एक सवाल है, यही मेन सवाल इनका है। ये कहते हैं कि हाँ सर, आपके जवाब जमीन देने का, मकान देने का वगैरह वो सब कुछ ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करता हूं। मैं फिर ये दोहराऊंगा, अभी आपने जो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है, ये गिर जाती है नीचे ही रखो। तो इसमें एक गांधरबल है जहां सिर्फ 9 केसेस को अप्रूव किया गया है और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने 252 केसेस को रिजेक्ट किया है। जम्मू में 133 और इसी तरीके से कठुआ में, किश्तवाड़ में और राजौरी में 1162 उनको भी रिजेक्ट किया गया है। माय पॉइंट इज दिस, देखिए यहां सर आपको मालूम है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, यहां एक लैंड ग्रांट्स एक्ट बना था 1960 में, जिसको हम हिस्टोरिक कहते हैं। नॉट दैट एक्ट इटसेल्फ, दैट वाज द समरी ऑफ, दैट वाज द सम अप ऑफ व्हाटएवर हैज बीन डन अर्लियर थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। उसको एबॉलिश किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब यूनियन टेरिटरी बनी, जिसका नतीजा यही है कि अब उस एक्ट के मुताबिक सिर्फ यहाँ के रहने वाले, जम्मू के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले ही जमीन पर काबिज रह सकते हैं या उनके कब्जे में रह सकता है। और जैसा कि अभी गवर्नमेंट का भी आदाद शुमार है, यहाँ एवरेज लैंड है एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। यहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, एवरेज लैंड है वो है 3 कनाल, सरकार कहती है 4 कनाल। 4 कनाल भी मान ले बहुत कम है, वो जम्मू में भी, किश्तवाड़ में भी, हर जगह पर, और कश्मीर में भी ऐसा ही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ऐसा हुआ कि अब कोई भी आ सकता है वगैरह, और जब डिस्ट्रेस इकोनॉमी हो, डिस्ट्रेस में लोग हों, तो लाजमी तौर पर वो फरोख्त भी कर लेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, अभी कल उमर साहब ने कहा और सही कहा, जो वो एक टेक्निकल चीज है, 370 अभी मौजूद है सर, मौजूद हो गिनती में, लेकिन सबस्टेंस में दैट हैज बीन एब्रोगेटेड, दैट हैज बीन एन असॉल्ट, दैट हैज बीन एब्रोगेटेड, दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज। इस वजह से मैं सिर्फ यही मिसाल देता हूं, जहां तक लैंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, विच रिमेन्स, विच मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछे। मैं वही कहता हूं, जहां तक लैंड का ताल्लुक है, उसके जो राइट्स हैं यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए थे, वो थे पहले, उनको एबॉलिश किया गया। मैं लैंडलेस, मैं इस वक्त यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार
इस बात को यकीनी बनाएगी जिस लैंड पर कास्टराई लैंड वगैरह लैंडलेस लोग बैठे हैं उनको इविक्ट ना किया जाए, ये मेरी गुजारिश होगी। स्पीकर सर, तारिक आमी साहब मजमूई तौर मुतमईन है, जो उन्होंने कहा था उसका हमने जवाब दे दिया था। इनका ये जो खदशा है वो ये है कि ये इज्तिमाई तौर उन लोगों के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं। इनका सवाल है, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है मैं सवाल के हवाले से ही जवाब दे दूंगा सर। PMAY में जो बेनिफिशरीज होते हैं सर, जिनके पास कोई लैंड नहीं, वो आइडेंटिफाई करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम जब सर्वे करते हैं, हम लिस्ट अपनी कंपाइल करके पूरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाती है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो हमें बताएं कि किसके पास लैंड है किसके पास नहीं है। और जब चूंकि फिजिकली हम जब वेरिफिकेशन करते हैं, हम जब पाते हैं कि कोई आदमी गरीब है, हम उसका कच्चा मकान है, तो हम उसको लिस्ट में डाल देते हैं। जब वो लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए डीसी साहब के पास जाती है कि हमने इनको लैंड अलॉट करनी है, डीसी साहब अपने रेवेन्यू अथॉरिटीज को कहते हैं कि इनकी आप वेरिफिकेशन कर ले। जब उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती, जिनके पास कोई लैंड नहीं है उनको हम लैंड अवेलेबल करते हैं उसी रेवेन्यू में जहां पर वो होते हैं। और जहां किसी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, बेशक वो अलग रहते होंगे बाप से अलग, मगर वालिद साहब की प्रॉपर्टी है 2 कनाल 3 कनाल, उनको इस खजरे में नहीं आते। हम इसीलिए जो हम लिस्ट यहां से भेजते, जिनका इसने जिक्र किया कि हमने कहीं 200 के करीब हमने लिस्ट भेजी, जब उसकी वेरिफिकेशन हो गई उसमें जो है 250 है रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वालिद साहब के नाम पर, कहीं 1 कनाल कहीं 1.5 कनाल। और रेवेन्यू पॉलिसी जो है, जिसके पास भी किसी 1 कनाल भी जमीन हो वो लैंड लेस करार नहीं दे सकते हैं उसको, तो वो इश्यू बनता हमारे लिए है। बाकी जो स्कीम है वो सबके लिए है सर, जो स्कीम आती है सैंक्शन आती है हम लोग उसको क्लियर करते हैं। चलिए तशरीफ रखिए। तारिक हमीद करा साहब, पूछे सर। AQ नंबर 1150, मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। Sir, AQ number 1150, housing projects taken up by SDA during last 3 years. Number 1, Shehjar Heights. SDA is constructing Shehjar apartments along with National Highway Bemina bypass on estimated cost of rupees 84.78 crores, wherein 112 flats are being offered to the general public. The applications have been invited on www.jkhm.in and the last date is 20th February 2026. The project is expected to be completed within 24 months, that is 2007 up to 2008. इसको हम पढ़ा हुआ तस्वीर करेंगे। लंबा सवाल लंबा है, वो सवाल पूछेंगे। पूछे सवाल क्या पूछना? सवाल जनाब 2 है हमारे। एक ही पूछो पहले। इसमें 2 सवाल है, एक सवाल में 2 सवाल है। पूछो। पहला पार्ट सवाल का है, यहाँ स्लैंग में बात होती है, अगर वो लैंग्वेज स्पेसिफिक बात करोगे तो कुछ लोग बोलते हैं सर के ऊपर से गया। जनाब एक पार्ट सवाल का ये है कि कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कंसीव किए गए हैं लास्ट 3 इयर्स में, अंडर एग्जीक्यूशन कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं, टाइम फ्रेम क्या है। मंशा वही है सवाल का। दूसरा सवाल है स्पेसिफिक टू EWS, वीकर सेक्शंस के लिए कितने प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने SD और JDA में 10 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। जनाब सॉरी टू से दिस कि कैजुअली जवाब दिए गए हैं, इन कैजुअल मैनर, सिवाय शहजार प्रोजेक्ट के कहीं भी एक जगह ये मेंशन नहीं है कि कब तक, चाहे DPR की बात हो, चाहे कंसेप्शन की बात हो, चाहे एग्जीक्यूशन की बात हो,
एक भी जगह नहीं, जनरलाइज करके यहां ये प्रोजेक्ट है बस, वहां वो प्रोजेक्ट है बस। दूसरी बात जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स के लेके पूरा कॉन्सेप्ट जो है हाउसिंग कॉलोनीज का, वो है जनाब पॉलिसी बेस्ड होना चाहिए टू मीट द सोशल नीड। एक तो वीकर सेक्शंस की, दूसरे जनरल पब्लिक की सुविधा, उसमें खास तौर वो एक अनप्लेजेंट ट्रेंड है लेकिन है, जो माइग्रेशन होता है, जो अर्बनाइजेशन होती है, उनके लिए हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं। हाउ नॉन सीरियसली द इंटायर सोशल नीड इज बीइंग टेकन। मैं जानना चाहूंगा कि जो जिन प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया गया है कॉन्सेप्ट लेवल पे कितने हैं, हैव दे मेड एन एक्सरसाइज, डीपीआर लेवल पे कितने हैं, प्रोसेस के लेवल पे कितने, टेंडरिंग कितनी की, और जो बने हैं उनका पोजीशन किसी को दिया गया है? आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, एक तो अगर सवाल सही तरीके से पढ़ा जाए, जो भी ऑनरेबल मेंबर ने इसमें पूछा था वो हमने जवाब दिया है, लेकिन जो ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कब होंगे, वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है 24 मंथ्स के अंदर जो है 2027 अप टू 2028। दूसरा, आपने कहा था डीपीआर कब बनेंगे, कब सबमिट होंगे, वो अगर आपने पढ़ा होगा सेकंड में प्रपोज्ड सैटेलाइट टाउनशिप श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो डीपीआर ऑलरेडी सबमिट हुए हैं और उन पे राखी गुंड अक्षा जो है वहां पे भी काम जल्दी से है, शुरू हो जाएगा। सर, सारा जवाब आया हुआ है, और जो बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, उन बोर्ड मीटिंग्स के जो डिसीजन हुए हैं वो भी ऑलरेडी उसका जिक्र किया गया है। इसी तरह आपने EWS, पहले जिनका सवाल ऑनरेबल मेंबर का है वो तो है नहीं, लेकिन अब ऑनरेबल मेंबर निजाम साहब कोई ना कोई इसमें जो ऑलरेडी जवाब है उसी में कोई ना कोई सप्लीमेंट्री ढूंढ रहे हैं। हमने जो है 3 साल का पूरे डिटेल्स आपको दे दिए हैं, वो जवाब से आपको मुतमईन होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कुछ और सजेशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। उन पे एक सेकंड और जो भी आपने यहाँ पे सजेशंस दिए हैं उस पे भी गौर किया जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का काम है, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इतने साल में टाइम पीरियड जो है वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इसमें इतने टाइम पीरियड में वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पूछिए निजामुद्दीन साहब। डिपेंडिंग द मिनिस्ट्री, देखिए हम एफिशिएंसी चाहते हैं, ठीक है, सजेशन हमारी वही है, लोगों के हित में काम होते हैं। वायर वी प्रपोज आर पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स, लेकिन आज नहीं, चलो सजेशन के ही पहलू में ले लो। यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी एफिशिएंट। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? चलिए आप तकरीर मत करो ना, अब तकरीर की बात। लेकिन जो उन्होंने कहा, मैंने यहीं से बोला कि शहजार और इसके बगैर कहीं टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। मेरी सजेशन रहेगी, जो प्रोजेक्ट्स अंडर हैंड लिए, एक तो वक्त पे उनको पूरा करो, दूसरी अर्जदाश्त ये रहेगी जहां कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, सर्टेन हाउसिंग कॉलोनीज ऑलमोस्ट कंप्लीट सीम टू बी अबंडन बिकॉज पोजीशन नहीं दिया गया। वटपोरा बांडीपोरा में मेरे गांव में है हाउसिंग कॉलोनी, वहां माइनिंग की लूट हो रही है दीवार के अंदर। दे कैन गो हैव एन इंस्पेक्शन एंड सी हाउ द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड। चलिए मुबारक साहब। सर ये जो सवाल है, जैसे आपको मालूम है कि श्रीनगर शहर में हाउसिंग की प्रॉब्लम है, लोगों की बड़ी मुश्किलात है, और हमारे जो लोग हैं वहाँ श्रीनगर शहर के एक एक मकान में 4-4, 5-5 फैमिलियाँ रहती हैं। और मुझे पता है कि ऑनरेबल सीएम साहब बड़े सीरियस है इस इशू को सॉर्ट करने में, लेकिन एक दो इशू है जिस हमारे इतनी ज़मीनें नहीं है कि हम कॉलोनियाँ बनाएंगे ज़्यादा। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट है कि जो मल्टी स्टोरी हाई टावर बिल्डिंग्स, अगर वो 10,000 किसी जगह ये बनाएंगे और उसमें हम दे सकते हैं लोगों को, छोटे छोटे फैमिलियाँ, 2 सेट के 2 कमरे, 1 किचन वगैरह, ऐसे वो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक इशू मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ,
शेर कश्मीर ने ये कॉलोनियां बनाई, भीमना वगैरह, बागी माताम, चनी हिम्मत, चनी रामा, तुरकोटा नगर, लेकिन इनका लीज खत्म हो गया है। कि मैंने देखा कि जो मकान, जो प्लॉट अलॉट किया गया है 4 मरले का या आधे कनाल का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या 1 कनाल के लिए, वो जाते बैंक के पास, मेरी बात सुने, वो जाते, यू आर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ देखा, वो जाते हैं बैंक के पास लोन के लिए, उनको नहीं देते हैं, कहते आपका लीज खत्म हो गया है। ये एक कमेटी बनानी पड़ेगी जहां भी कॉलोनी, गवर्नमेंट की कॉलोनियां हैं जो लीज खत्म हुआ 40 साल का, उनको आगे और रिलीज करा। लेकिन आई एम टेलिंग ओनली अबाउट द हाउसिंग पीपुल। चलिए आगे आपकी सजेशन आ गई। सैफुद्दीन भट्ट साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। AQ नंबर 263, मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। Number 263A. Yes, sir. It is a fact that the internationally known tourist destinations Dot Pathri, Tosa Maidan and Yusmarg have remained closed for tourist activities for the last 9 months owing to security-related considerations. Part B. Yes, sir. The prolonged closure of these tourist destinations has adversely affected the local economy, thereby impacting the livelihood of ATV operators, vehicle owners, ponywalas, stall owners, guides, and other stakeholders dependent on tourism activity in these areas. C. Yes, sir. The continued closure caused distress among local youth, including those who had availed loans from various financial institutions for running tourism-related businesses in the said destination. Part D. The matter regarding reopening of Dot Pathri, Tosa Maidan and Yusmarg involves security considerations which is beyond the mandate of the Tourism Department at present. A DO letter from Honorable MLA Khan Saab in this regard has been forwarded to Deputy Commissioner Badgam by letter number TSM-TDA 51 of 2021 dated 29/10/2025 for appropriate action. E. Due to the unfortunate incident at Pahalgam and the consequent restrictions imposed by the district administration, the snow skating games at Dot Pathri could not be organized. F. The gondola ropeway project at Tosa Maidan has been proposed by PWD R&B Department through National Highway Logistics Management Limited under the Parvatmala scheme as conveyed by Government Order number 373 PW R&B of 2023 dated 6/9/2023. थैंक यू सर। अब मैं जवाब तो इससे मुतमईन नहीं सर, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम साहब से, मैं इसके जवाब से मुतमईन। इनके हाथ में ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मैटर है, मगर मसला ये है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी भी और ब्यूरवा की भी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक बर्निंग इशू बन गया है। ये 3 डेस्टिनेशंस हमें वहां पर इस वक्त लोग स्ट्रेस में हैं। अगर कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एटीवी वालों को बैंक लोन ने उनने 8-8 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख लोन लिया है, घोड़े वालों ने, होटल वालों ने, तो उस लोन के पीछे गवर्नमेंट पड़ी है। कोई रिलैक्सेशन उनके लिए हो जाए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर बैंक को डायरेक्शन, या उन्होंने ये लिखा है डीसी साहब को, हमने कहा है कि आप ये कर दीजिए रिव्यू, इसमें जवाब से इनके मुतमईन की इनके हाथ में, मगर डीसी साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो केस को रिओपन ही नहीं कर रहे हैं। उसको मैंने 3 चिट्ठियां लिखी, पर्सनली गया वहां पर, वो कह रहे हैं एसएसपी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ये वो करेंगे, इसमें स्टार्टअप क्या करेंगे। तो एक ही गुजारिश है कि अगर गवर्नमेंट से कुछ हो सकता उनके लिए रिलीफ का कुछ, तो सीएम साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पॉसिबल है कुछ उनको लोन में कुछ रिबेट या कुछ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब का कहना बिल्कुल सही है और हमने जवाब में इस चीज को तस्लीम किया है कि वहां इस क्लोजर के वजह से लोगों को एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है वो पहुंच चुकी है। ये सही है कि क्लोजर का ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट से आता है, लेकिन ऑनरेबल एमएलए साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डिसीजन जो है वो डीसी नहीं कर सकता, न एसएसपी कर सकता है। ये उनके लेवल से बहुत ऊंचा है जहां पे ये फैसले होंगे। मैंने कल ऑनरेबल एलजी साहब के खुतबे के जवाब के दौरान यहां कहा था कि होम मिनिस्टर साहब के मुलाकात के दौरान
मैं इस चीज का जिक्र जरूर करूंगा कि जहां जहां टूरिज्म के हमारे डेस्टिनेशंस बंद हैं उन्हें दोबारा खोल दिया जाना चाहिए ताकि सही मायने में टूरिज्म वहां रिवाइव हो। लेकिन उसके साथ साथ जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने कंसर्न जताया और उन्होंने कहा कि हमें एक पैकेज के लिए जो है सोचना चाहिए ताकि थोड़ा सा हम उनको रिलीफ दें जिनको इकोनॉमिकली इस चीज का जो है नुकसान भुगतना पड़ा है, उस पर हम जरूर सोचेंगे। अरे अच्छी बात है। नजीर अहमद खान साहब, नजीर अहमद खान साहब सवाल नहीं पूछ रहे। इससे पहले एक क्वेश्चन है कौन वाला नहीं, ये हमने पहला क्वेश्चन जो है वो पोस्ट डेफर किया है, वो डेफर किया है। सर क्वेश्चन नंबर 771, मिनिस्टर इंचार्ज GAD। Part A, posts in Gurez area are filled adequately as per the sanctioned strength and staff are posted in accordance with the prescribed rules and procedures. The government monitors staffing positions across all regions to ensure smooth functioning of offices and delivery of public services. Part B, while certain departments experience vacancies from time to time due to routine administrative reasons, there is no acute shortage of staff affecting overall functioning. The government is taking necessary steps to address vacancies and ensure smooth delivery of public services. Part C. In the current legal framework, recruitment to government posts in Jammu and Kashmir, including Caste 4 posts, is governed under the Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules 2010 and the rules framed thereunder. The Decentralization and Recruitment Act, as amended by the central government pursuant to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, vide SO 1229E of 2020 dated 31st March 2020, provides for employment on the basis of domicile defined under law legally resting on domicile criteria under the same framework. Part E. Recruitment to government posts is governed by the Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Act 2010 as amended by the central government pursuant to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, vide SO 1229E of 2020 dated 31st March 2020 and the rules framed thereunder. Under the said framework, eligibility for appointment is based on domicile of the Union Territory of Jammu and Kashmir and no specific area reservation is provided under the Act or the rules. सर जैसा कि ऑनरेबल CM साहब को भी मालूम है, गुरेज एक ऐसा इलाका है सर, हाँ क्लास 4 अगर भांडीपोरा से भेजते हैं, क्लास 4 सुंबल से भेजते हैं, सोनावारी से भेजते हैं, पहले दिन वो ज्वाइन करता है, जो ही उसको ऑर्डर निकलता है उसके बाद वो पुलिस एंड प्रेशर लाता है कि मुझे वापस लाओ, और ऑनरेबल MLA वहाँ का सिफारिश करता है, कोई ब्यूरोक्रेट सिफारिश करता है तो वापस आ जाते हैं, ये पोस्टें खाली रहती है। मैं मानता हूँ इस वक्त यूटी के अंदर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं एक एश्योरेंस चाहता हूँ ऑनरेबल CM साहब की तरफ से कि जब ये स्टेट बनेगी और स्टेट बनने के बाद क्या गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी, जो प्रीवियसली वहां चल रहा था कि क्लास 4 उसी इलाके से भर्ती किया जाता था ताकि वो वहां रहे। सर वो भी इंसान है सर, वो भी वहां के रहने वाले इंसान है कि ना उनको हम टीचर दे सकते हैं, ना डॉक्टर दे सकते हैं, ना इंजीनियर दे सकते हैं, फिर कैसे वो गुजारा करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी मास माइग्रेशन जो गुरेज से होती है इसी वजह से होती है कि उनके पास मौजूद नहीं होता है स्टाफ। मैं मानता हूं सर आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, आप गुरेज को मुझसे बेहतर जानते हैं, गुरेज का आपको इल्म है कि वहां पर क्या मुश्किलात हैं। तो मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहता हूं सर, जब स्टेट बनेगी क्या आप उस प्रीवियस जो शेख साहब के जमाने में जो SRO हुआ था उसको कंसिडर करके उसको दोबारा से लाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है, हाइपोथेटिकल आंसर ही दे दूंगा स्पीकर साहब। ऑनरेबल MLA साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस सिलसिले की ये बात कर रहे हैं वो हमारी पुरानी पिछली हुकूमत में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 2010 के ऑर्डर के तहत, बिल्कुल इसी चीज को देखते हुए, चाहे वो गुरेज हो, टंगदार हो, मत्सिल हो, हमारे पाडर, दक्षिण, मड़वा, दूर दराज इलाके जहां स्टाफ भेजना मुश्किल हो जाता है, लोग जाना पसंद नहीं करते, हम चाहते थे कि क्लास 4 जो है वहीं से लगे और वहीं पे काम करें। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगने के बाद ये सिलसिला जो है ये बंद हुआ। अब ऑनरेबल MLA साहब ने कहा है जब रियासत होगी
तब हम इस पे क्या दोबारा गौर करेंगे। बिल्कुल ना, इंशाल्लाह जल्दी रियासत होगी तो जल्दी इस पे गौर भी किया जाएगा। एजाज अहमद जान साहब, अच्छा जरा ये मिनिस्टर साहब कुछ करना चाहिए। एजाज साहब, अरे 1240 ये कहाँ गया? डेफर क्यों हुआ ये क्वेश्चन? सर सवाल का जवाब भी तो आ गया था, डेफर कैसे हो गया? ये हमने किया डेफर, आपने किया? इसमें रिक्वेस्ट आई थी, ये हमने डेफर नहीं किया। आपके लिए नहीं, ये ऑनरेबल मेंबर जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। रूल है, अगर एक ऑनरेबल मेंबर जिसके नाम पर सवाल लगाया गया हो, अगर वैलिड रीजंस पर वो इसको डेफर कराना चाहे, ही इज नॉट हियर, उसका कोई बीमार है, ही इज आउटसाइड द स्टेट, ये कोई सजा नहीं हमने दे दी डिपार्टमेंट को, हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ नंबर 1292। हाँ जी, मिनिस्टर इंचार्ज फॉरेस्ट। For AQ 1292, the district-wide details of stone crushers and hard mix plants in Jammu province granted consent to establish and consent to operate by the JKPCB during 5 years is given as under. Jammu, with effect from 1st January 2021 to February 2026. Jammu 9, CTE 9, CTO 67. And hot mix plant के लिए CTE and CTO की डिटेल साथ में 15, सांबा में CTO 20, hot mix plant 4 and CTO 9, कठुआ में 14, 60, 2 and 14, उधमपुर में 4, 27, 1 and 14, रांची में 5, 14, 1 and 8, राजौरी में 7, 43, 4 and 17, पुंछ में 10, 40, 1 and 13, किश्तवाड़ में 11, 26, 1 and 6, डोडा में 8, 32, 3 and 13, रामबन 4, 17, 1 and 6, total consent to operate and consent to establish 72, 346, 19 and 115. सवाल लंबा है, तो पढ़ा हुआ तस्वीर करेंगे, जवाब बहुत लंबा है। सवाल पूछना होता है सर। पहले भी मेरा जो ऑनरेबल मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया, मुझे सरकार को जवाब देने की इजाजत होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि हमारी कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है। इसमें 1 घंटा लगेगा जवाब देने में। सर तो घंटा पड़ा हुआ करे सर, मेरा सवाल है। पूछे सवाल। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरा इस सवाल का लाने का मकसद ये है कि इन्वायरमेंट और जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए। सर आप देखिए, कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू ऑपरेशन, अगर आप फिगर्स देखेंगे, आप फिगर्स देख के हैरान हो जाएंगे कि बहुत डिफरेंस है। और कई जगह पे कंसेप्ट जो कंसेंट दी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन फिर भी वहां पे वो लग गया है क्रशर, वहां पे हॉट मिक्सिंग प्लांट लग गया है। और सर मेरे सवाल में मैंने इनको पूछा था कि अब जो नए नॉर्म्स हैं पिछले 2-3 सालों से, मैं समझता हूं कि वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सैटेलाइट से जो है वहां देखा जाता है, और डिपार्टमेंट लिख रहा है कि पहले हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे सैटेलाइट के। लेकिन आप हैरान होंगे सर, 2025 में ही एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 14 क्रशर और हॉट मिक्सिंग प्लांट लग गए। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर, हम वहां पे जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इस तरीके से डिपार्टमेंट को रोक लगाइए। थोक के हिसाब पे ये बांट रहे हैं, परमिशनें बांट रहे हैं, और उसमें जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो हमें बार बार आके पूछते हैं। और सर आए दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर दिन सर ये मीडिया में आया होता है
मेरी इनसे गुजारिश है, पहला सप्लीमेंट्री यही है कि इसमें क्या रोक लगाने जा रहे हैं जो ये खुलेआम सर 1 साल में 14 एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर पूरे स्टेट का फिगर देखेंगे आप हैरान ही हो जाएंगे सर। ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न सही मैं मानता हूं और जितने भी हॉट मिक्स प्लांट्स और क्रेशर्स धड़ाधड़ लग रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में और मौसमी तगीर और तबदल और ये सब चीज़ें जो है इस पर इफेक्ट करती हैं और इसमें मैं चाहूँगा कि क्योंकि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट का ये है नहीं है कंट्रोल, इसमें माइनिंग भी है, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं। मेरा अपना डिपार्टमेंट जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो है इंटरमिंगल्स होके ये इसमें एक तो मैं कहूँगा कि ओवरलैपिंग भी होती है और दूसरा ये है कि एक टू जनरेट इनकम, तो सरकार का ये भी रहता है कि क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, तो हम ये कोशिश सरकार की ये रहती है कि जहां भी ऐसा कोई डिमांड आती है, कोई नौजवान कोई कंपनी हमारे सामने आती है तो उसको एस्टेब्लिश करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाता है, हर सूरत में नॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाता है। जहां तक इनका ये क्वेश्चन है कि सीटीई और सीटीओ में काफी डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है और उसकी जानकारी के लिए मैं सर ये बताऊं कि बहुत से यूनिट्स हैं जिनके लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिश का ले लेते हैं, लेकिन वो यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है और क्योंकि वो बार बार फिर उसके लिए 5 साल के लिए कंसेंट दी जाती है, तो 5 साल में कई यूनिट्स जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं, तो एक चांस दोबारा दिया जाता है। तो लिहाजा इस पे कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू जो एस्टेब्लिश है इसकी फिगर्स में जो वेरिएशन है वो इस लिहाज से है क्योंकि ऑपरेट जो है वो काम करते हैं, कंसेंट टू एस्टेब्लिश जो है वो हर आदमी लेने की कोशिश करता है और बाद में लोन्स वगैरह या दूसरी जो फैसिलिटीज उसमें उसको अवेलेबल करनी होती हैं वो ले नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से ये सारा जो सिस्टम है वो फ्लैप हो जाता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये इनके सवाल का जवाब तो यही था। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं 2 चीजें ही चाहता हूं। एक तो मिनिस्टर साहब इसकी एश्योरेंस दे कि जो नॉर्म्स में नहीं आते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नॉर्म्स में नहीं आते हैं क्या ये उनको क्लोज करेंगे और जो इसके नॉर्म्स बनाने वाले हैं और वो इनको जो जहां पे गलत मिलेंगे क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट के लिए 2025 में तो अगर हम ये कहें कि 2025 में भी सैटेलाइट नहीं चल रहा है, मैपिंग नहीं हो सकती, तो फिर मेरे समझ नहीं है, मुझे सिर्फ इनकी एश्योरेंस चाहिए और उसके बाद हम ग्राउंड पे देख लेंगे फिर हम आगे क्या होगा। मेरे साहब का कंसर्न बिल्कुल सही है। जो मैपिंग और जो इस डिस्टेंस जो इससे पहले मैपिंग होता था, क्योंकि पहले जो है ये गूगल मैपिंग नहीं था, आप जो सिस्टम जो है साइंटिफिक तरीके से इसकी मैपिंग की जाती है और ये सही फरमा रहे हैं ऑनरेबल एमएलए साहब कि जो इससे पहले जो मैपिंग हुई उसमें क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से आता था, एजुकेशन की तरफ से आता था, रेवेन्यू की तरफ से आता था, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की तरफ से आता था, रिलीजियस प्लेसेस की तरफ से आता था, तो लिहाजा उसमें ओवर फ्लैपिंग होती थी, तो उसमें ये रहता था कि कहीं गलत भी जो है वो हमें उसमें कंसेंट टू ऑपरेट या कंसेंट टू एस्टेब्लिश उसमें हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज जो गूगल मैप किया जा रहा है, अर्थ मैपिंग की जा रही है, तो उसमें ये कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं हो सकती है और जहां भी कहीं अगर कोई शिकायत अगर है ऑनरेबल एमएलए साहब को, उसमें अगर कोई हमारे सामने आती है तो हम उस पर सख्ती से उस पर कार्रवाई करेंगे। और पुंछ से हमें एक रिपोर्ट मिली थी जिसके लिए हमने ऑलरेडी इंक्वायरी इनिशिएट की है और कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन मैं ये ऑनरेबल एमएलए साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैं इसमें एक गुजारिश ये करूं सर कि इस पे क्योंकि इसमें 2 डिपार्टमेंट जो हैं काम कर रहे हैं और इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसमें मैं कहूंगा कि
एक प्रोसीजरल जो इसमें फ्लाज हैं उनको सेटल करने की सर जरूरत है। तो इसमें बैठ के इंशाल्लाह ताला हम ये जो इंटर डिपार्टमेंट्स जो फ्लाज हैं इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शक्तिराज परिहार सवाल AQ नंबर 506। AQ number 506, present power supply position in the district is such that the curtailment ranges from a minimum of about 3 hours to a maximum of about 5 hours per day as per load curtailment. क्या और क्या जाए सर? सर मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा, RDSS स्कीम जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की है, डिवीजन जो है, वो 86 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हुआ, जो 2023 में जो काम शुरू हुआ। लास्ट ईयर भी इसी हाउस में मैंने यही बात रखी थी, यही क्वेश्चन था कि उसका बड़ा स्लो प्रोग्रेस है। 12% उस वक्त प्रोग्रेस था और ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा था कि हम इसको तेज करके इस फाइनेंशियल ईयर में इसको पूरा करेंगे, लेकिन टिल डेट अभी तक जो रिप्लाई आया है 31% टोटल इसकी प्रोग्रेस अभी तक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो जाना है। सर एक बहुत बड़ा नेक्सिस है कि अगर फाइनेंशियली आप देखें तो पैसा बहुत ज्यादा निकल गया होगा, सप्लाई वाला पैसा, पोल तार के पैसे निकल गए, ट्रांसफार्मर्स के, लेकिन ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन होनी है, जो काम होना है वो नहीं हो रहा। और दूसरा जो स्टाफ की कमी, सर एक मिनट, जो वहां पे कमी, जो दूसरा जो था इसमें, जो स्टाफ की वहां पे टेक्निकल स्टाफ की जो कमी वहां पर है, यानी 247 की जगह 171 यानी 76 टेक्नीशियन। इतने फार फ्लंग एरिया में अगर आपको काम करना है तो वहां अगर टेक्नीशियन नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? द क्वेश्चन ओवर इज ओवर। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश करेंगे। नहीं, इस वक्त नहीं। Honorable Speaker, sir, सफर तवील है, भोज भी भारी है, पर हर सूरत ये सफर जारी है। With deep humility and unwavering resolve, I rise today to present my second budget as Finance Minister. It is a privilege to be entrusted with the responsibility of shaping the financial future of our land. This budget is not merely a ledger of figures, it is a fiscal compass, charting our path towards a brighter horizon. It lays strong foundations for an enduring economic growth, social harmony, and sustainable prosperity. As we embark on this shared journey, I invite every honourable member of this august House to come together and work collectively to build a strong and flourishing Jammu and Kashmir. The soul of Jammu and Kashmir has been forged in resilience and strengthened by hope. Through changing seasons and testing times, our people have stood firm, drawing wisdom from the past and courage from the future. Guided by this enduring spirit, our government is committed to transforming Jammu and Kashmir into a modern, progressive and economically vibrant region. Together, we will turn obstacles into stepping stones and aspirations into achievements. We are building a business-friendly ecosystem that invites innovation and investment, turning Jammu and Kashmir into a hub of enterprise and ideas. This vision has been shaped through wide-ranging consultations with elected representatives, industry leaders and stakeholders. Their voices have enriched this budget and ensured that it remains people-centric. By engaging directly with every member of this House, we have laid the cornerstone of a new culture of participatory governance. The past year has been nothing but challenging for Jammu and Kashmir and for the entire nation. At the national level, we have seen our growth path suddenly challenged by geopolitical challenges. While the national economy is accelerating at 6 to 8% growth rate, we see our access to global markets being constrained by trade frictions. Even in Jammu and Kashmir, just as our economy was consolidating with renewed vigor, the barbaric terrorist attack at Pahalgam and its aftermath shocked us. The devastating floods in August and September have severely battered the Jammu region. These two calamities have further accentuated the fiscal challenges before us. All the sectors of economic activity, including tourism, handicrafts, horticulture and agriculture, are badly affected. There is substantial loss of jobs and business in all sectors, leading to financial distress on families.
This budget gives us an opportunity to analyze these challenges incisively and respond to them resolutely by reforming with great vigor. This budget is anchored in the vision of inclusive and sustainable growth driven by fiscally prudent strategic investments across infrastructure, public service and governance. It seeks to bridge regions, unlock potential and create pathways of opportunity, especially for our youth and women who are the architects of tomorrow. Jammu and Kashmir's fiscal stress stems from high committed expenditure and limited own revenue capacity. Own tax and non-tax revenues cover only 25% of our budgetary needs. The geographical difficulties, structural constraints and inefficiencies, especially in the power sector, further accentuate this stress and lead to reliance on central support. To address this, my government has pursued fiscal reforms to enhance revenues, rationalize spending and improve fiscal transparency. While the GST rate rationalization undertaken by GST Council has dented our revenues, we have leveraged the analytical inputs from the Business Intelligence Unit or BIU, GST Network and the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics, BISAC, to prevent leakages and ensure strong GST enforcement. We have deployed the e-Abgari portal and e-stamping to streamline excise administration and land registration. We also ensured transparent auctions to boost revenues. This has led to our own tax revenue and non-tax revenue rising to 10,265 crores and 4,964 crores respectively as of December 31st, 2025. While these figures are lower than last year's collections of 10,624 crores and 5,114 crores respectively, we are making sustained efforts to exceed last year's collections by 31st March. The government's fiscal stress stems from the committed expenditure on salaries, pensions and debt servicing, which alone account for nearly 60% of overall outlay. Hence, initiatives in debt management are being taken to lower high-cost liabilities and eliminate off-budget debt. We are strengthening debt sustainability by keeping all borrowings within approved limits and improving liquidity management. For the third consecutive year, we have enforced the austerity measures for curbing non-priority spending. My government is pursuing the power sector reforms to reduce losses and improve billing efficiency. We are expanding the consumer base and aerial punched cables and executing loss reduction works in all districts. These reform measures are expected to ease financial stress and lay the foundation for a fiscally prudent development path. Still, Jammu and Kashmir continues to face significant infrastructure deficits in areas like road connectivity, water supply, sewage, tourism and power. For addressing these challenges, substantial financial resources and continued support from the central government are essential. My government actively engaged with the central government to resolve our fiscal issues. I met with the Union Home Minister and Union Finance Minister on multiple occasions. I am pleased to share that the central government has remained cognizant of our difficulties and consistently supported us through special assistance, for which we are grateful. This year, Jammu and Kashmir was brought under the ambit of the Special Assistance to States for Capital Investment, or the SASCI scheme. This decision reflects the confidence of Government of India in the reform orientation, financial discipline and execution capacity of Jammu and Kashmir. SASCI scheme provides us 50-year interest-free loans for undertaking capital investments and infrastructure projects. It has emerged as a transformative fiscal instrument as it emphasizes on substantive reforms in several key sectors by providing financial incentives for such reforms. My government has proactively leveraged this new opportunity. Under the untied allocation, 1,431 crores, we are accelerating execution of capital projects, including the hydroelectric power projects. Our capital works are aimed at strengthening infrastructure across critical sectors. Recognizing the progress achieved and the effective utilization of funds by Jammu and Kashmir, the central government approved an additional allocation of 1,431 crores under the untied component. Building resilience and reducing disaster risk is now a critical priority under SASCI. After the devastating floods in the Jammu region, we ensured a detailed visit of the interministerial team and coordinated their inspections. My government submitted detailed reports and proactively pursued financial assistance with the central government, which has now approved further allocation of 1,431 crores for disaster mitigation and restoration works. We will utilize these SASCI funds for the creation of protective and preventive infrastructure and for strengthening preparedness. Under the reform components of SASCI, Jammu and Kashmir has undertaken far-reaching mining sector reforms, qualifying for incentive of 100 crores. Similarly, the land
governance reforms was started to improve transparency, ease of doing business, and citizen trust. As on date, land records of 6,839 villages have been fully computerized. Cadastral maps of 6,464 villages are digitized. Over 68 lakh land parcels have been recorded, and ULPIN has been assigned to 13.25 lakh parcels. The revenue court case management system is operational in 881 revenue courts, significantly reducing delays, disputes, and inconvenience to citizens. These reforms helped us complete the digital crop survey and qualify for an incentive of 60 crores. Under the Naksha initiative, the aerial survey in Bishna town has been completed, thereby earning an incentive of 5 crores. Under urban planning reforms, a GIS-based data bank of industrial land has been integrated with the Indian Industrial Land Bank. Reforms such as land pooling, GIS-based planning, green buildings, flexible zoning, road rationalization, and amendments to building regulations have been undertaken. Based on these, my government has submitted a proposal for availing 454 crores under this incentive. I am happy to note that the fiscal consolidation measures, the persistent implementation of reforms, and the strategic capital investments are accelerating our economy. Our gross state domestic product, or GSDP, is estimated to grow from 2,36,059 crores in 23-24 to 2,62,458 crores in 24-25 and is projected to rise to 2,88,422 crores in 25-26, signaling a decisive leap in our GSDP. In 25-26, the primary, secondary, and tertiary sectors are projected to contribute 20, 18, and 62% to GSVA, respectively. Jammu and Kashmir's economy is estimated to grow at 11%. Driven by our sustained initiatives and strategic policy interventions, this positive GSDP trajectory has supported Jammu and Kashmir to tackle the aggravated fiscal challenges after the Pahalgam tragedy and the recent floods. With confidence in our direction and faith in our collective strength, I am certain that Jammu and Kashmir will emerge as a leading region of development, innovation, and opportunity. My government is working to strengthen administrative capacity, modernize civil services, ensure efficient recruitment, and enhance institutional infrastructure in Jammu and Kashmir. We have actively implemented Mission Karamyogi, which aims to train civil servants through its role-based, competency-driven approach. Out of 3.74 lakh employees, 1.25 lakh employees have been onboarded, and 53,073 employees are actively engaged in their training. My government has made employment generation a central pillar of its governance agenda. With a clear focus on speed, transparency, and merit in public recruitment, I am pleased to inform this House that 7,650 candidates have been appointed to government service during the year 2025, purely on the basis of merit through a transparent and technology-driven recruitment process, restoring faith of our youth in public institutions. I propose to fast-track the recruitment process for 23,800 additional posts, including 2,800 gazetted, 14,000 non-gazetted, and 7,000 Class 4 posts, so that these vacancies are filled in a strictly time-bound manner. In addition, 910 compassionate appointments have been provided during 2025, ensuring that families who have lost their sole breadwinners are able to cope with dignity, security, and hope. These measures reflect our firm resolve that every deserving youth gets a fair opportunity and that public employment in Jammu and Kashmir remains transparent, accountable, and accessible to all. My government is fully conscious of the long-standing aspirations of daily rated workers, casual and temporary workers who have served the administration for years under difficult conditions and with limited job security. Last year, a high-level committee was constituted to examine all legal, financial, and administrative aspects of regularization of daily rated workers so that a fair, transparent, and sustainable policy framework could be evolved. I assure this House that my government is committed to finding a just and humane resolution to this long-pending issue, and based on the recommendations of the committee, a structured and phased roadmap for regularization will be announced in the coming period. Our objective is to ensure that those who have devoted the prime years of their lives to public service are given dignity, security, and a stable future within the framework of law and fiscal responsibility. My government acknowledges the invaluable contribution of ASHA and Anganwadi workers, who
who form the backbone of our public health and early childhood care systems. Their dedication at the grassroots level, especially in reaching the most vulnerable sections, deserves our deepest appreciation. Government is committed to removing the impediments to ensure timely release of their honorarium. I am also pleased to inform this House that honorarium of vocational instructors has been enhanced, reflecting our commitment to recognizing the role of skilled educators in strengthening employability and vocational education. We have strengthened the infrastructure of our recruitment and accountability agencies. Construction of police stations for the Anti-Corruption Bureau in Jammu, Baramulla and Anantnag will be completed by the end of the financial year. Similarly, the Jammu office of the JKSSB is nearing completion, and the construction of JKSSB building at Srinagar is expected to be completed by June 2027. My government has restored the Darbar move in a structured and modernized manner, reaffirming its importance as a unique administrative tradition that strengthens regional integration and participatory governance. The restoration of the Darbar move has already begun to revive economic activity in Jammu, benefiting transport operators, hospitality sector, small traders, service providers whose livelihoods depend on this seasonal movement of administration. My government is working to strengthen facilities and welfare measures for government employees associated with the Darbar move, including improved accommodation, better office infrastructure, digital connectivity and enhanced logistical arrangements so that the move becomes more efficient, employee-friendly and cost-effective. This approach ensures that the Darbar move is not merely symbolic, but a productive governance mechanism that supports both economic vitality and employee well-being. The agriculture and allied sectors are undergoing transformation through the interventions under the Holistic Agriculture Development Program and the Competitiveness Improvement of Agriculture and Allied Sectors project, backed by IFAD assistance. The focus has shifted from subsistence practices to a diversified, climate-smart and income-centric agricultural economy. The cultivated area has expanded from 12.71 lakh hectares to 13.50 lakh hectares. The seed replacement rate, or SSR, has risen from 12% to 22%, enhancing productivity and crop resilience. Protected cultivation has expanded, and 332 high-tech greenhouses and 848 polyhouses established over 29.84 hectares. These facilities have enabled enhanced cropping intensity up to 250% and reduced climate-induced risks. The area under oil seeds has expanded substantially from 1.4 lakh hectares to 2.1 lakh hectares, resulting in a doubling of oilseed production and reducing dependence on imported edible oils. Kisan Khidmat Gars, or KKGs, are empowering farmers by enabling technology-driven last-mile delivery. By 2025-2026, over 8 lakh farmers were onboarded onto Kisan Sathi and KKG apps, with 1,300 KKGs getting operational. By March 2027, universal digital farmer coverage is targeted through full integration of digital crop survey under PM Fasal Bima Yojana. 2.1 lakh farmers covering 75,732 hectares were registered during Tariff 2025, ensuring crop risk mitigation. Under Command Area Development and Modernization of Command Area Development, irrigation potential of 4.53 lakh hectares has been created by December 25, and further 16,207 hectare potential is proposed for 26-27. Mushroom cultivation has emerged as a high-return allied enterprise, with production increasing by 31% from 2,100 metric tons to 2,742 metric tons over the past 3 years through establishment of 227 mushroom units and distribution of 1.18 lakh compost bags. Apiculture has popularized, with honey production growing at 77% in 3 years to over 3,895 metric tons, aided by the distribution of 1.03 lakh bee honey colonies and establishment of 11 honey processing units. Under the high density plantation scheme for horticulture, about 1,119 hectares has been covered since 2017-18 till December 2025, with assistance of 139 crores. Further, 18,915 hectares are covered under medium density plantations.
Our food production increased from 26.43 lakh metric tons in 23-24 to 26.92 lakh metric tons in 24-25. We aim to reach 29.72 lakh metric tons production by 29-30. Further, 1,455 hectares shall be covered during 2026-27 under the medium and high density plantation. A mega fruit nursery is commissioned at RS Pura, Jammu with capacity of 5 lakh quality saplings of subtropical fruits. 2 elite nurseries or plant establishment quarantines are being developed at Marta in Udhampur and Levan in Anantnag for providing high quality planting material. During the year 26-27, public and private sector nurseries aim to produce 8 lakh planting material and 17.84 lakh rootstock fruit plants. Further, 6 hectares of mother orchards, 15 hectares of rootstock banks and 40 hectares of plant propagation units will be established during 26-27, further strengthening conservation efforts. SCOS Jammu has established a state-of-the-art ex-situ gene bank, becoming the 3rd institution in India with such a facility. The dairy and livestock sector has recorded robust growth, with annual milk production reaching 28.75 lakh metric tons, driven by systemic breed improvement, expanded artificial insemination coverage, and improved animal management practices. I am proposing setting up 7 milk processing plants of 1 lakh litre. 7 milk processing plants of 1 lakh litre per day capacity in Jammu and Kashmir, costing approximately 770 crores, funded through UT Capex and Government of India schemes. This scheme is going to benefit 11 lakh dairy farmers. My target is to take J&K in milk processing from the current 4% to 25% in the next few years. We are proposing a top-up subsidy of 15% under the Integrated Dairy Development Scheme for PMFME beneficiaries establishing milk processing. The formation of 4,000 new dairy cooperative societies, along with milk FPOs and self-help group clusters, will strengthen grassroots ownership and efficient procurement. To support this ecosystem, 40 bulk milk coolers, 40 testing labs, 200 Milko-Chill units, and 50 Insta-Chillers will be deployed. For transforming the dairy ecosystem, we will be expanding milk processing from 5% to 12% for enabling efficient handling of 10 lakh litres per day and enhancing productivity. This will boost organized dairy cooperative turnover from 407 crores to 1,898 crores annually, translating into an additional 300 crore income for 3 lakh farmers each year. With these interventions, annual milk production is projected to increase to 32 lakh metric tons and milk collection and chilling capacity expected to rise to 5.5 lakh litres per day by 26-27. The E-National Agriculture Market, or ENAM, platform has been successfully rolled out, enabling farmers to sell their agricultural and horticultural produce without physically bringing it to mandis. Out of 19 wholesale mandis, 17 mandis are integrated with ENAM platform. Since its inception in 2021, over 55,000 farmers, traders, FPOs and commission agents are registered as cumulative and cumulative trade worth 1,721 crores has been conducted through ENAM up to December 2025. To further boost the poultry sector, we will establish 800 commercial poultry units and 50,000 backyard poultry units so as to produce approximately 250 million eggs. This will make poultry farming more remunerative and reduce dependence on imported poultry inputs. Further, fish production is expected to increase from 31,000 metric tons in 25-26 to 33,000 metric tons in 26-27. Contributing to improved availability of fish and enhanced incomes for fish farmers. The agriculture and allied sectors has been allocated 1,878 crores under capital expenditure for 26-27. Under the Mahatma Gandhi Narega, 250.07 lakh person days were generated in 25-26. The construction of Panchayat infrastructure is progressing steadily with 367 Panchayat Bhavans tendered, 354 allotted and 297 taken up. Under PMAY, 3.21 lakh houses have been completed,
while construction of the remaining 14,000 houses is in progress. Soil and moisture conservation activities such as contour bunding, terracing, water harvesting and field protection works have been initiated under IWMP, resulting in treatment of 1,219 hectares of degraded land and completion of 369 conservation works covering 5,286 hectares in 25-26. Under the Lakhpati Didi initiative, 2,952,000 self-help group women have already become Lakhpati Didis. The remaining 32,048 potential households will be covered by June 2026 to enhance women's economic empowerment and rural enterprise. We will proactively increase the number of Lakhpati Didis by converging this initiative with Mission Yuva. Under Umeed, 98,312 women farmers were trained in 25-26. JKRLM facilitated credit linkage for 13,103 self-help groups, amounting to 418 crore, benefiting 26,200 households. Capacity building under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan has trained 14,685 officers and officials, including Panchayat secretaries. This year, 2025 was designated as J&K Green Mission to drive community-led environment stewardship and plantation. The rural sector has been allocated 3,456 crores under capital expenditure for 26-27, an increase of 40 crores from the revised allocation of 25-26. My government considers tourism as a key pillar of economic growth and livelihood generation in Jammu and Kashmir. Despite the challenges faced during the year, including the unfortunate Pahalgam incident and subsequent floods, Jammu and Kashmir recorded over 1.61 crore tourist visits in 25-26, reflecting the resilience and continued confidence in our destination. I propose to build a sustainable, inclusive and year-round tourism economy, balancing infrastructure development with environmental conservation and community participation. Our focus will be on developing new world-class tourist destinations, strengthening tourism circuits, and positioning Jammu and Kashmir as a global tourism brand with financial and technical support from the Ministry of Tourism, Government of India. Environmental infrastructure has been prioritized with sanctioning 3.2 million lakh MLD STP at Gulmarg and starting of upgradation of solid waste management plant. Similar measures are planned at Sonmarg for reinforcing protection of the fragile ecosystem. My government is also working on restoration of heritage sites and shrines through the Culture Department. This initiative will aim to preserve cultural identity, boost local economies through tourism, and strengthen community pride. For diversification of tourism towards winter sports, water sports, and adventure tourism, procurement and execution of supportive infrastructure is underway. Water sports facilities at Wular Manasbal and Bani Basoli are being developed. Sports tourism is also being promoted through strategic investments. The Kashmir Marathon and Jammu Marathon are placing J&K on the national and international sporting map. The second Kashmir Marathon 2025 with a 3-day expo recorded over 3,000 registrations with participation from 27 states and union territories and 11 countries. We garnered 2.11 crore in sponsorships and 0.20 crores in registration fees, validating its economic and promotional potential. In 2026, we will be organizing an international film festival in association with the National Film Development Corporation. This festival will bring world cinema to Jammu and Kashmir, promote cultural diversity and stimulate the local economy. We have launched J&K Tourism mobile app for offering verified real-time information, integrated booking services and AI-based assistance. This will become the entry point for tourists, providing comprehensive support and boost business opportunities for local hotels and entrepreneurs. The homestay policy addressed peak season accommodation shortages while empowering local households. We have established over 1,600 registered homestays in Kashmir division and 300 plus in Jammu division. We have partnered with J&K Bank to provide concessional assistance for such homestays, which will be popularized through our portals and J&K Tourism mobile app. Skill development and entrepreneurship form a core pillar of government's employment strategy in Jammu and Kashmir. We intend to launch a skill mission to equip our youth with superior skills
For this, skill and entrepreneurship framework will be developed, covering foundational skilling, internships, and industry-ready technical skilling. The mission will emphasize upgradation of polytechnics and ITIs, on-the-job training opportunities, and lifelong learning. The tourism and youth affairs sector has been allocated 4,472 crores under capital expenditure for 26-27, an increase of 61 crores from the revised allocation of 25-26. My government accords high priority to the preservation, restoration, and promotion of our rich cultural and heritage assets, which are central to the identity, history, and tourism potential of Jammu and Kashmir. During 26-27, provision has been made for completion of all ongoing projects under Phase 1 of the Heritage Revival, Restoration, and Maintenance Scheme, and for fast-tracking the execution of approved projects under Phase 2 and Phase 3. I further propose to ensure comprehensive coverage of heritage conservation, including execution of heritage projects of the Tourism Department across Jammu and Kashmir and the value-based restoration of the Mughal-era Nishat Garden in Srinagar. I also propose to expedite the modernization of the SPS Museum, strengthen and modernize the public library network, and expand inclusive cultural infrastructure through establishment of new cultural centers at Bandipur, Shopaiya, Anantnag, Kishtwar, Udhampur, Poonch, and Budgam. In addition, enhanced budgetary support will be provided to the J&K Academy of Art, Culture and Languages to promote youth engagement through cultural programs and national initiatives, ensuring that our cultural heritage remains vibrant, accessible and future-oriented. The Culture Department has been allocated 109 crores under capital expenditure for 26-27. Despite the challenging environment, the industries sector recorded strong progress during 25-26. Reflecting investor confidence. Since 2020, 2,227 industrial units in the organized sector involving an investment of 15,940 crores and generating employment for 73,827 persons have commenced production. Investment grounding reached an all-time high of 5,260 crores till December 2025. Under the new central sector scheme of 28,400 crores, 971 applications involving 14,292 crores were registered, with 87% of new and expansion units commencing production. Claims of 403 crores were approved under NCSS, taking cumulative approvals to 840 crores. For the 2026-27, amendments to the J&K Industrial Policy 2130 are proposed to sustain industrial growth post-NCSS, ensuring continued employment and income security. My government is taking decisive measures to support medium and small enterprises and facilitate ease of doing business. I propose to introduce a self-certification scheme for MSMEs under which enterprises will receive a single in-principle approval with a 3-year grace period for clearances, enabling them to start operations without procedural delays and compliance bottlenecks. I further propose to extend incentives to SIC MSMEs at par with new industrial units so that viable enterprises are revived, existing jobs are protected, and business closures are prevented. Reimbursement of CGTMSE, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, guarantee fees up to 10 lakh loans were approved with an allocation of 41.30 crores. Jammu and Kashmir secured the 5th rank in ease of doing business in November 2025. The first ever MSME health clinic was launched by IIM Jammu, covering 417 units, which focused revival plans underway for 70 sickness-prone MSMEs. MSME formalization surged, with Udyam registrations rising from 0.24 lakh in 2021 to 5.85 lakh in 25-26, and a target of 7.1 lakhs has been set by 2027. We received the National MS-EFC Excellence Award for online and timely MSME dispute resolution. The startup ecosystem expanded from 69 startups in 2020 to 1,342 in 25-26, including 490 women-led ventures.
A new startup policy was launched and 18 startups were sanctioned, seed funding of 20 lakhs each. Over 1,100 ideas were generated through boot camps and outreach. Enhanced allocations are proposed in 26-27 for upgrading infrastructure in existing industrial estates to support MSMEs. Startup support will be strengthened through high budgetary allocations, incubators and co-working spaces in Srinagar and Jammu. To sustain rural self-employment, higher allocation is proposed under the J&K Rural Employment Generation Program for the year 26-27. The handloom and handicraft sector provides direct and indirect employment for nearly 4.45 lakh individuals, primarily from economically weaker sections. GI certification capacity increased fivefold. 8 new crafts were GI registered in 2025 and 17 more are in advanced stages. We are strengthening QR code-based certification and testing infrastructure. We won the National ODOP Gold Award for the second consecutive year. Artisan credit card saturation is being pursued aggressively with 21.06 crores disbursed to 1,011 artisans during 25-26. Our 4 artisans received national honours, including the Shilp Guru Award and the National Awards for Handicrafts. The industry and handicraft sector has been allocated 461 crores under capital expenditure for 26-27, an increase of 137 crores from revised allocations of 25-26. The Institute of Driving, Training and Research, or IDTR at Kot Balwal, will be made operational this year for professionalizing road safety in Jammu. The IDTR will be equipped with 7 automated driving tracks and state-of-the-art machinery, ensuring that every new driver is trained to the highest national safety standards. In parallel, the transition to automated testing stations, or ATS, is underway to ensure vehicle fitness and commuter safety while protecting the environment. This technology-driven approach involves electronic evaluation of brakes, suspension and emissions, replacing manual fitness testing. Registration certificates have already been issued to private operators, with the first ATS operational since September 25. The Inspection and Certification Centre at Samba will soon be commissioned to serve as a government sector hub for automated testing. JKRTC continues to provide uninterrupted transport for passengers and food grains and horticulture products, reinforcing its role as a reliable and resilient public transport and logistics provider. We need to strengthen inter-district transportation, particularly in rural and underserved areas, to provide reliable, comfortable and affordable services. The revival of Jammu and Kashmir Road Transport Corporation will be a key focus of 26-27. As part of a green mobility initiative under the PM E-Drive scheme, 200 electric buses are planned to be inducted with an estimated investment of 350 crores, replacing aging diesel fleets with modern zero-emission vehicles. To further strengthen JKRTC's commercial and logistical capacity, 50 new trucks will be procured under SASKI funding of 75.70 crore. The transport sector has been allocated 21 crores under capital expenditure for 26-27. While we are blessed with unique mineral wealth, it is important that it is harnessed transparently and sustainably. Hence, we are implementing the integrated mining surveillance system in collaboration with BISAC-N. This system will enable satellite-based monitoring of mining areas, generate real-time triggers on illegal mining activity, and share this with enforcement officers for prompt verification and legal action. The first phase of IMSS has been operationalized, and over 110 triggers have been generated for technology-driven action for curbing illegal mining. To strengthen on-ground enforcement, e-challan machines have been introduced in collaboration with J&K Bank for issuing on-the-spot challans to violators. The first ever auction process for the 7 limestone mineral blocks in Jammu and Kashmir marks a significant step in implementing mining reforms. This will enable transparent digital auctions for mineral resource allocation and boost our revenues. The mining sector has been allocated 4 crores under capital expenditure, an increase of 2 crores from the previous year. Significant upgradation of health infrastructure in the recent years has improved public healthcare delivery and medical education. More than 4,000 health infrastructure facilities have been developed, including 15 medical colleges, 2 AIIMS and 2 state cancer institutes.
The new 160-bedded block at the Bone and Joint Hospital, Srinagar, with a cost of 140 crores, has been operationalized since July 2025. The commissioning of the 100-bedded Mother and Child Care Hospital at Lamberi, Rajouri, upgradation of SDH Bilawar to a 100-bedded facility, construction of a 50-bedded hospital at Sundarbani, upgradation of the 100-bedded hospital at Naushera, and the 125-bedded district hospital at Reshipura, Badgam has been accelerated. To strengthen diagnostics, the process for installing 1.5 Tesla MRIs in the new GMCs and 3 Tesla MRIs at GMC Jammu, GMC Srinagar and SKIMS has been initiated. Installation of CT scan machines is underway in major hospitals like DH Badgam, SSH Srinagar, DH Poonch, SMGS Jammu, CD Hospital Jammu and SMHS Srinagar. This initiative will be further expanded. PET scan facilities will be installed at GMC Srinagar and extended to GMC Kathua during 26-27 to enhance cancer diagnostics. Mobile medical units and mobile dental units are proposed to improve outreach in far-flung areas. The Sehat app has been launched to enhance healthcare delivery by integrating services, providers and patients on a single digital platform. More than 16 lakh users have started seeking benefits on this app. Digital health and remote care are being upgraded with provision of 32 crores for establishing 80 telemedicine centers and enabling clinical consultation in far-flung regions. De-addiction OPDs are functional and 6 new facilities are under construction to expand de-addiction support. Construction of homeopathic college at Rakh Hoshiari, Kathua and Ayurvedic College at Amargarh, Sopore will commence in 26-27 to expand Ayush education and care options. All 523 Ayushman Arogya Mandirs dedicated to Ayush services have been fully operational across Jammu and Kashmir, providing Ayush therapies and preventive health interventions. Ayush infrastructure has been expanded by commissioning the 10-bedded integrated Ayush hospital at Jammu and Government Ayurvedic Hospital at Kulgam. Medical education has been strengthened. During the current year, 548 medical seats will be added, comprising 340 MBBS, 128 PG, 34 PG Ayurveda and 46 DNB seats. AIMS Kashmir will be commissioned by June 2026. GMC Srinagar and GMC Jammu have each been allotted 20 additional MBBS seats. Further, GMC Doda, GMC Anantnag, GMC Baramulla and GMC Kathua have been allotted 50 additional MBBS seats, thereby expanding pool of medical professionals. Quality nursing education will be enhanced through creation of trained manpower in 10 nursing colleges. With the unprecedented approval of 240 MBBS and 120 PG seats, infrastructure of all GMCs will be strengthened in the financial year 26-27 with a budget of 216 crores. The health and medical education sector has been allocated 1,866 crores under capital expenditure. Path-breaking reforms have been undertaken in the education sector to ensure comprehensive implementation of the national education policy. To strengthen early childhood education, pre-primary classes have commenced in 15,550 schools. We provisioned 30 crores for establishing 5,000 kindergartens with child-friendly infrastructure. In 25-26, 1,735 kindergartens were set up, 7,672 schools received child-friendly furniture. Additionally, 188 modern kindergarten buildings costing 122 crores have been sanctioned under Samagra Shiksha. School infrastructure is being upgraded with 396 schools being developed as exemplar schools under PM Shri. Further, 762 additional classrooms worth 160 crores have been approved. To promote future-ready learning, ICT facilities will be established in 2,036 schools. 4,200 smart classrooms are being commissioned under Samagra Shiksha and PM Shri. Innovation capacity is being expanded with the ongoing 172 Atal Tinkering Labs and proposed 500 ATLs.
Skill-linked education and governance reforms are progressing in parallel. Vocational education has been introduced in 554 schools with 2,294 vocational trainers. Further, 2,214 vocational trainers are under implementation. Teaching capacity is being enhanced with 594 lecturer vacancies being referred for recruitment. Further, 2,217 schools are being solarized. To enhance monitoring and learning outcomes, district Vidya Samiksha Kendras are being set up for educational analytics. The reforms launched by our government have led to significant improvements in school education results in 25-26, with class 10 and class 12 pass percentages reaching roughly 85%, marking one of the best performances in recent years. Key improvements include increased high-performing girl student passing rates of 86% and a notable rise in government school performance. My government is undertaking crucial initiatives in higher sector education to make our youth skillful and competitive. The 4-year undergraduate program is being universalized in all degree colleges. Records of 34.50 lakh students of class 10, 11 and 12 have been uploaded on DigiLocker by J.K. Bose as part of the Digital Transformation Initiative. Additionally, 74 government degree colleges were upgraded with NAC accreditation to enhance quality of education infrastructure in Jammu and Kashmir universities is being strengthened with support under RUSA 1 and 2. The key initiatives and priorities of the Higher Education Department will aim at development of classrooms, laboratories and libraries for universities, colleges and improvement of autonomous affiliated colleges and development and upgradation of their sports infrastructure. All colleges in Jammu and Kashmir are offering access to National Digital Library of India for faculty and students. Under the Sustainability Initiative, 494 buildings are proposed to be solarized at a cost of 50 crores. During the next financial year, 26-27, 5 college buildings at GDC Kakrayal, Katra, GDC Zainapura, GDC Vailu, Larnu, GDC Tulel, GDC Cheneni and Architect College of Engineering, Jammu shall be made functional. Further, construction of buildings at GDC Frisal, Kazigund, Darhal, Verinag and Majalta will be completed during 26-27. The capital projects of government degree colleges at Kunjwani, Mandi, Ajas, Dadu Basantgarh, Marheen, Ramkot and Batot are being accelerated. A policy for establishment of private universities is being finalized to increase access to higher education and boost creation of skilled workforce. 4 research hubs in Jammu division and 3 research hubs in Kashmir division are being upgraded to expand research capacity in line with NEP aspirations. To build a stronger research ecosystem, 22 lead research colleges have been identified for equipping them with laboratories and academic infrastructure in alignment with NEP standards. The school and higher education sector has been allocated 1,513 crores under capital expenditure for 26-27. We will be undertaking a path-breaking initiative in science and technology sector by investing 30 crores to operationalize 2 non-functional industrial biotechnology parks at Kathua and Handwara. This will leverage institutional partnerships with SCOS Jammu and SCOS Kashmir and help these parks transform into vibrant research and entrepreneurship hubs by equipping them with advanced instruments and qualified scientific staff. This biotechnology innovation ecosystem will generate 1,000 crores in economic value and create high-value scientific jobs. Under PM Kusum, 5,000 solar agriculture plants have been installed, covering nearly 14,000 acres with capacity of 14 megawatts. This will result in annual average savings of about 18,000 rupees per farmer. An allocation of 20 crores is proposed under PM Kusum 2.0 for expansion of solar-powered agriculture pumps to reduce diesel consumption. In the government sector, 2,725 buildings have been solarized with capacity of 39 megawatts, yielding substantial fiscal savings.
Further, 13 small hydropower projects with capacity of 35 megawatts are under implementation through IPP mode. To ensure inclusive clean energy transition, I propose saturation of 100 tribal villages as solar villages. We will distribute 15,000 smokeless cook stoves and 11,200 solar home lighting systems to improve energy access and health outcomes in tribal areas. We are currently supporting 274 ongoing research and development projects and providing 130 scholarships to students from +2 level up to PhD for supporting higher education and research. To develop skilled manpower in emerging sectors, we propose skilling and placement linkages for approximately 2,000 youth in renewable energy, clean technologies and biotechnology. A major initiative proposed is the establishment of hydro-solar parks of 15 megawatts each to provide turnkey infrastructure for utility-scale solar deployment. This will reduce project risk and enable faster commissioning of solar projects. To accelerate clean technology adoption, we propose expansion of EV charging infrastructure, including solar-based charging stations and solarization of feasible government buildings. The science and technology sector has been allocated 177 crores under capital expenditure for 26-27, an increase of 42 crores over the previous year. My government is prioritizing youth development through an integrated approach to sports, culture, fitness and civic engagement. Modern sports infrastructure is being developed to ensure a bright future for young athletes. So far, 2 centers of excellence and 92 Khelo India centers have been established. Digital enablement will be operationalized to scale youth registrations on the My Bharat portal from 5.5 lakh to 20 lakh. We aim to build a digital athlete ecosystem with unique IDs, performance dashboards, verified certificates and tracking from grassroots to elite levels. A structured tournament pathway has been institutionalized and over 15.39 lakh students now participate at various levels, leading to 2,500 athletes representing J&K at the National School Games. Jammu and Kashmir successfully conducted the 5th edition of its flagship winter sports program, reinforcing its position as India's premier sports capital. We also hosted the first ever Khelo India Water Sports Festival, giving fresh momentum to rowing, kayaking and other water-based disciplines. The hosting of the 3rd Asian Pencatsilat Championship with participation of about 300 athletes from over 12 countries showcased J&K's organizational excellence. J&K athletes have delivered strong results with 11 gold, 9 silver and 18 bronze medals at the 69th National School Games and notable performances at international events including the Paris 2028 Paralympics. Over 29 lakh youth engagements were ensured up to December 2025 with large number of sports activities including 1 national event, 20 UT level championships, 5 major leagues and 338 community sports programs. Alongside flagship events such as the Jammu Cyclothon, Football and Cricket Premier Club Cups, South Kashmir Volleyball League, Snow Festivals and the 6th Khelo India Winter Games 2026 in Gulmarg and Srinagar. The Sports and Youth Affairs sector has been allocated 155 crores under capital expenditure for 2026, an increase of 17 crores over the previous year. Employment generation through entrepreneurship is a key priority of this government. To systematically promote self-employment across Jammu and Kashmir, we have launched Mission Yuva as a mission mode initiative anchored on the 4C framework of culture, capacity, capital and connectivity. Mission Yuva has achieved wide and deep grassroots outreach. The Mission Yuva app has recorded 2 lakh downloads with applications received from nearly 95% of panchayats across the Union Territory. So far, about 7,000 applications have been received and 55,000 DPRs have been prepared through a strong institutional framework at the district level. 27 business development units at the district level, 80 business helpline desks at the sub-divisional level and 2,000 Yuva Doots at the grassroots are actively hand-holding applicants, supporting them through the entrepreneurial journey. As a result of this structured approach, 47,000 applications have been approved by the district level implementation committees. 16,500 enterprises have been sanctioned by banks with nearly 800 crores already disbursed in the first year of this scheme.
Another 2,000 applications are under active processing with banks and are expected to be sanctioned shortly. Applications returned by the banks are reprocessed through a facilitative non-rejection mechanism supported by a dedicated business helpline. Capacity building remains integral to Mission Yuva. Over 8,000 entrepreneurs have completed structured training, while another 5,000 are currently undergoing entrepreneurship development programs. To ensure transparency, efficiency and accountability, Mission Yuva is supported by a comprehensive end-to-end digital dashboard enabling real-time monitoring of applications and outcomes. The Mission Yuva app functions as a one-stop digital platform for aspiring entrepreneurs, and it is already operational. In the coming year, the government will further scale up Mission Yuva through convergence with skilling, credit and market linkage initiatives supported by adequate budgetary provisions. Transforming the skilling ecosystem in Jammu and Kashmir forms a core pillar of the government's employment strategy. A comprehensive 4-track skill and entrepreneurship framework has been adopted, covering foundational level skilling at school level, a career launchpad for youth through minor skilling alongside graduation, internships, placement support and accessible coaching. Industry-ready technical skilling through restructuring of polytechnics has been proposed under the proposed skill university, upgradation of ITIs through PM Setu and strengthening of on-job training under PM NAPS is also underway. These tracks will be enabled by a robust ecosystem comprising structured placement mechanisms, career guidance and other assistance. 5 new ITIs will be developed as hub ITIs under the new central scheme, which will serve as specialized centers for advanced technical training, high-end skilling and industry-linked vocational education. To further improve labour welfare and grievance redressal, a toll-free helpline, Shram Mitra, has been established to provide timely support to workers. Infrastructure for labour mobility and social security is being enhanced through the construction of new labour sarais at Wanpo, Anantnag and in Rajouri, along with upgradation of Labour Sarai Kathua to provide safe night shelter for migrant labour. Additional Labour Sarais at Washbug, Pulwama and Bargam, a model Labour Sarai at Naushera are also in the pipeline. The labour and employment sector has been allocated 244 crores under capital expenditure, an increase of 98 crores from the previous year. My government remains committed to the resettlement and welfare of Kashmiri migrant families. We are accelerating the construction of 6,000 transit accommodations for Kashmiri migrant government employees. As on date, out of 4,096 completed flats, 3,250 flats have been allotted. During the current financial year, 944 flats have been completed, and we propose to complete the targeted 1,200 flats during 26-27. The POJK Bhavan at Suketar, Jammu is targeted for completion during 26-27. Once completed, it will emerge as a powerful tribute to resilience of the displaced persons from POJK and West Pakistan. Multi-purpose community hall at Jagti Mini Township, Jammu will soon be commissioned to advance the welfare of migrant communities. My government also remains firmly committed to ensuring dignified living conditions and seamless access to essential services for migrant families. In this direction, we aim to improve the civic and utility services in migrant colonies at Jammu and all transit camps. We aim to extend the benefits of Ayushman Bharat or the Sehat health insurance scheme to migrant families. We will strengthen the digital service delivery to simplify and expedite access to essential documentation for migrants. A dedicated online platform has been established for issuance of key certificates for migrants and for registration and grievance redressal related to migrant properties. I am pleased to share that through this digital initiative, over 1.64 lakh domicile certificates, 36,541 migrant certificates, 2,325 RBA certificates, 1,597 EWS certificates, and 2,789 income certificates have been issued to Kashmiri migrants. Additionally, 14,619 registration certificates have been issued to Kashmiri migrants and displaced persons from POJK, ensuring employment for the migrant community.
Smart PDS has been initiated for rollout in 26-27 to strengthen service delivery, curb leakages and enhance transparency in the distribution of essential commodities across Jammu and Kashmir. As an important measure of social protection, the government has started providing 10 kg of free ration per person to all AAY beneficiaries from 1st April 25, thereby ensuring enhanced nutritional support for the most vulnerable households. Additional food grains are already being supplied free of cost to eligible AAY beneficiaries as promised. Further, fair price shops are being upgraded to improve accessibility and streamline distribution, reinforcing our commitment to an efficient, inclusive and citizen-centric food security architecture. The food and civil supplies sector has been allocated 331 crores under capital expenditure, an increase of 57 crores from the previous year. My government aims to enhance tribal welfare in a holistic fashion by strengthening their education, housing, rural infrastructure and livelihoods. At present, 28 tribal hostels with a capacity of about 2,900 students are providing free boarding, lodging and education. Additionally, 26 hostels are under construction. We will commission 10 such hostels. In the coming months. Six Eklavya model residential schools are functional and over 260 smart classrooms have been established. Pre-metric and post-metric scholarship schemes continue to benefit ST students and improve retention and educational access. Under the Dharti Abha Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan, 393 tribal majority villages across 20 districts have been covered, with 39.21 crore released during 25-26 for infrastructure and allied works. Livelihoods are being strengthened through 1,500 mini sheep, goat and dairy units, along with 10 milk villages and 3 milk chilling plants. For nomadic transhuman tribes, 7 transit accommodation units are under construction along migration routes, of which 2 are already complete. Janjatiya Gaurav Divas was celebrated at Mender in Poonch district, a frontier border district of India, on the 15th of November 2025 to commemorate the 151st birth anniversary of the revered tribal freedom fighter Shri Birsa Munda. The Tribal Research Institute at Khimbar, Srinagar is supporting evidence-based policy through surveys, baseline surveys, etc. The Forest Rights Act cells are being established at UT and district levels with an outlay of 3.77 crores to ensure effective implementation of forest rights. The Tribal Affairs sector has been allocated 235 crores for capital expenditure for 26-27. We have expanded social security coverage for vulnerable and financially distressed households through the ISSS and National Social Assistance Program. In 25-26, the scale of pension was enhanced and new eligible members were added. My government increased the monthly pension rates from Rs 1,000 to Rs 1,250 for beneficiaries below 60, to 1,500 for those 60 to 80, and to 2,000 for those 80 and above. The number of elderly persons, widows and persons with disabilities covered by social pensions was increased from 7.35 lakh in March 2024 to 10.19 lakh in January 2026. Of these, 8.83 lakh beneficiaries are under the integrated or the ISSS and 1.3 lakh are under the NSAP. The annual pension outlay was enhanced from 1,209 crores to 1,755 crores, ensuring greater financial security and dignity for most vulnerable citizens. We will work with the central government to increase the disability pension further by 25%, benefiting over 1.62 lakh pensioners. In 2025-26, the financial assistance under the marriage assistance scheme was enhanced from 50,000 to 75,000 rupees for poor girls from AAY families. The earlier requirement of being an 8th class pass was also relaxed to saturate the coverage of the scheme for all eligible girls. As a result of these reforms, the number of beneficiaries increased from 26,000 in 24-25 to 44,302 in 25-26, with expenditure amounting to 234 crores as of December 2025.
Inclusive education will be strengthened through special schools for specially able children at Baramulla and Anantnag. The composite home at Nanil Anantnag will soon be operational. The halfway home at Ganderbal will strengthen rehabilitation and reintegration services. The SC/ST building at Muthi is scheduled for inauguration in April 2026. My government is committed to strengthening financial security for girl children through the Ladli Beti scheme. Since its inception, the scheme has grown from just 16,095 beneficiaries in 17 to 1.92 lakh girl coverage enrolled by late 2025. Under NRLM, 96,000 self-help groups have been formed, mobilizing over 7.84 lakh rural households to foster savings, credit access, and enterprise development. We have successfully implemented free ridership for women on all government-owned public transport, including smart city e-buses and JKRTC services from April 2025. The ridership of women in such buses has jumped substantially, providing secure, green and convenient transport for women. This has been a path-breaking reform, making J&K one of the few regions in the country to operationalize zero-fare travel for women. The social welfare sector has been allocated 170 crores under capital expenditure. We have witnessed the devastation caused by natural calamities in the recent past. Hence, the government is emphasizing on disaster mitigation and preparedness. For building resilience to future disasters, my government has, for the first time, started building a disaster risk mitigation fund with an initial corpus of 39 crores. I am pleased to share that the guidelines for the disaster risk mitigation fund are being finalized. Under the National Landslide Risk Mitigation Program, 6 priority projects have been identified for undertaking timely mitigation measures. The Sakoon 2.0 platform has been digitized. The entire disaster relief process, replacing manual procedures with an end-to-end online system. Relief disbursement timelines have been reduced from 5 to 6 months to 15 to 20 days, ensuring transparency, accountability, and direct benefit transfer. The disaster management sector has been allocated 351 crores under capital expenditure for 26-27. To enhance institutional capacities and policy framework, we have partnered with IIM Jammu to make the Center for Innovation and Transformation in Governance operational. It has started work on skill development plans, PPP policy, FTI policy framework, etc. Jammu and Kashmir has made significant progress on sustainable development goals, and as per Niti Aayog's SDG India Index, Jammu and Kashmir has emerged as one of the fastest improving UTs in the country for sustainable development goals. The planning sector has been allocated 331 crores under the capital expenditure for 26-27, an increase of 16 crores from the revised allocation of the previous year. We have developed a forward-looking power sector plan to achieve round-the-clock electricity supply for all consumers by 27-28. This strategy addresses generation, transmission, distribution, and reforms for ensuring sustained energy security and long-term financial viability. We have started taking decisive steps on all these dimensions. 4 major hydro projects, Pakaldul, Ratle, Kiru, and Kwar, with a combined capacity of 3,014 megawatts are under rapid execution. We have leveraged the SASKI funding to provide our share of equity for these projects in an accelerated fashion. We have finalized a comprehensive renewable energy policy for 26-27 encompassing solar, wind, rooftop wind and battery energy storage systems and the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. 16,816 households have been solarized to provide free and clean electricity. Further, government buildings have been solarized aggressively. I am happy to inform the House that the Ministry of New and Renewable Energy has sanctioned the installation of rooftop solar systems of 2 kilowatts each at 2.22 lakh AAY households under the RESCO model. Special initiatives are being taken for strengthening power infrastructure along the Baltal and Pahalgam axis for the Amarnath Yatra through permanent underground cabling for ensuring uninterrupted and safe power supply.
For strengthening transmission and distribution infrastructure, a record 5,708 MVA of capacity has been added to the distribution sector and 4,239 to the transmission sector over the last 5 years. My government is also focusing on loss reduction, service improvement and enhanced consumer satisfaction. For this, installation of new and augmented distribution transformers, comprehensive HT-LT network improvements, strengthening of receiving stations, sub-transmission lines and electrification of unelectric households in remote areas such as Kathua, Poonch, Rajouri, Gurez and in Bandipur is being undertaken. We are installing smart meters to reduce AT&C losses and under-recovery in the power sector. Already with the installation of 10.44 lakh meters, losses have been reduced by 9% while revenue has increased by 16%. During the last winter, the peak demand of 3,157 megawatts was met in December 2025. This year, J&K registered an all-time high peak supply of 3,362 megawatts. We have successfully improved the continuity of supply by reducing curtailments. The power sector has been allocated 1,718 crores under capital expenditure for 26-27. With commissioning of the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail line, Kashmir has been connected with the rest of the country through all-weather train services, fulfilling a long-cherished dream. The first ever Food Corporation of India food grain freight train connecting Kashmir with the national freight network has been operationalized. Expansion and modernization of Jammu Tawi railway station and Jammu airport are progressing steadily. Jammu and Kashmir's road network is witnessing massive upgradation with an investment of 16,528 crores in construction and upgradation of expressways, national highways, two ring roads for Jammu and Srinagar city. 3 tunnels including Sonmarg have been completed, while 8 tunnels including the Zujila tunnel are at an advanced stage of completion. I express my gratitude to the central government for sanctioning 19 new national highway projects estimated at an estimated cost of 10,637 crores to further strengthen connectivity. Under PMGSY 4, 2,400 unconnected rural habitations in Jammu and Kashmir will be connected. During the year 26-27, I propose to undertake macadamization and blacktopping of nearly 3,500 kilometers of roads. This will be achieved through multiple flagship programs including PMGSY, Central Road Fund, Infrastructure Fund, NABARD, Cities and Towns, Pothole-Free Roads, SASKI and other programs. Smooth and more reliable road connectivity is what we have promised and what we will deliver. The public works sector has been allocated 4,061 crores under capital expenditure, an increase of 333 crores from the revised allocation of last year. In fulfillment of the commitment to provide clean tap water to every household under the Jal Jeevan Mission, more than 15.62 lakh rural households, or 81%, have been successfully provided with pipe water connection. Additionally, Har Ghar Jal certification has been achieved in 867 villages, marking significant progress towards universal water coverage. We will work with the central government to expedite the ongoing JJM works after verifying due diligence and source sustainability of all works. A water supply project at AIIMS Avantipur costing 54.58 crores will create 1,600 KLD capacity for operational needs. Work on phase 2 for drawing surface water from Jhelum and water supply project at AIIMS Vijaypur have also achieved significant progress. Under UT CAPEX, 393 water supply schemes have been completed out of the planned 810 schemes, improving potable water access. Additionally, the Lar Canal project in Gandharbal, costing 25 crores under NABARD RIDF 30-24-25 is under execution. The Shapur Kandi Dam project has made significant progress since 20
Since 22nd September 25, regulated gravity flow of water has commenced, with the canal presently conveying approximately 150 cusecs. My government has significantly expanded irrigation coverage under the Command Area Development Program, benefiting over 2.25 lakh hectares of cultivable land and extending irrigation access through ongoing projects. I am happy to note that the department has received central funding in flood control sector, which was pending for the last few years. To improve water efficiency in rain-fed and vulnerable areas, activities under the watershed development component of PMKSY 2.0, including land leveling, contour bunding, check dams, farm ponds and drainage lines, are being implemented. The Jal Shakti sector has been allocated 2,558 crores under capital investment. My government accords high priority to sustainable urban transformation through improved civic services, affordable housing, environmental management and institutional reforms. 227 smart city projects have been commissioned to give a massive fillip to urban infrastructure in Jammu and Srinagar. 200 e-buses are now operational. 200 additional e-buses are being procured. To strengthen wastewater management, new SBM projects are being undertaken, new STPs are being created, and a cluster-based approach is being adopted. Under Amrut 2.0, 90 projects in water supply and sewage sector worth over 1,000 crores have been approved, of which 17 have been completed and 67 are under execution. Bioremediation of 28 lakh metric tons of legacy waste is targeted for completion in our major cities. For integrated waste management, Srinagar city has been selected under CIT IIS 2.0 program. An action plan of 67 crores has been formulated for 700 TDP pre-processing unit. Under pollution abatement of water bodies, projects amounting to 358 crores have been undertaken. In the sphere of urban planning, 25 Class 2 towns have been approved for GIS-based master plans with assistance of 22 crores under Amrut 2.0. Housing for all remains a key priority under PMAYU 1.0. 42,585 beneficiaries stand approved, out of which 34,734 dwellings have been completed. Under PMAY 2.0, 26,582 applications have been registered, of which 2,522 houses have been sanctioned. To improve urban infrastructure, investment is being made in parking spaces, bus stands, urban roads, sewage, drainage, slaughterhouses, civic infrastructure. Multi-level car parking facility construction is underway in Jammu, Ramban, Doda, Udhampur, Kishtwar, Kathua, Samba, Riyasi, Shupaiyan and Bandipur. Additional parking projects at Baramulla and Vijaypur bus stand and bus stands at Bandipur and Samba are also in the pipeline. A flagship recreational initiative includes the development of an 11.64-acre water park at Jagti Nagrota in PPP mode, comprising water rides, resort, retail and family entertainment infrastructure. This will be an important addition to Jammu's tourism infrastructure for the future. Integrated Command and Control Center has been made live with integrated data center, intelligent traffic management, emergency response system, environmental sensors, etc. The housing and urban development sector has been allocated 2,809 crores under the capital investment. My government aims to ensure efficient and accessible justice delivery through the development of quality judicial infrastructure, construction of a new High Court complex in Srinagar. The mega project of 908 crores will be accelerated during the financial year 26-27, strengthening judicial infrastructure. Our government is steadfastly pursuing the construction of the state-of-the-art legislative complex in Jammu to replace the century-old facility at the Civil Secretariat. We have also started implementing the National E-Vidhan application project. It is being operationalized in phases. The NEVA project will include procurement of network equipment, desktops and other IT equipment to make the assembly functioning truly paperless.
The government remains committed to establishing a national law university in J&K to advance legal education, promote research, and contribute to institutional reforms. The Law and Parliamentary Affairs sector has been allocated 257 crores under capital expenditure, an increase of 17 crores under the previous year. We are working on significant upgrades to the J&K State Data Center. The hiring of Meghraj Cloud Services is in process. Meghraj will provide infrastructure platform, software and storage to government departments, enabling optimized ICT spending. It will also ensure data residency and robust security standards for public sector applications. My government is aiming to establish state-of-the-art IT and IT-enabled services parks in Jammu and Srinagar to attract and generate employment and create a robust technology ecosystem. This initiative emphasizes government, industry, academia collaboration. A center of excellence in AI has been sanctioned with an outlay of 20 crores over 4 years. This center is set to drive research and applications of AI in education and governance and regional security startup. The rollout of e-offices 2.0 up to Tehsil and block level has been institutionalized, has institutionalized paperless governance. As of today, 21,972 users of 4,061 offices have been onboarded. The system has ensured transparent file movement, faster decision making, and improved administrative efficiency, reinforcing accountable and citizen-centric governance. To make government services more accessible, a centralized WhatsApp-based service delivery platform will be introduced. Citizens will soon be able to access 100 to 150 high-volume services across 15 departments through secure multilingual chatbots. My government will invest in advanced capacity building training for citizens, and the Chief Minister's IT initiative program will be further strengthened to build future-ready talent pool capable of supporting a digital Jammu and Kashmir. The GAT information technology sector has been allocated 109 crores, an increase of 36 crores over the previous year. To promote afforestation, we have planted 510 lakh saplings over the last 5 years to expand tree cover. In 25-26, around 5,000 hectare area will be afforested and around 1 lakh saplings will be planted under various schemes. Demarcation and digitization of forest boundaries are being accelerated for protection of forest lands. We are targeting 19,752 installations and 55,056 surveys of boundary pillars. For development of wetlands and zoological infrastructure, 35 crores has been earmarked. Additionally, 25 crores has been earmarked for Wooler Lake, covering eco parks, shoreline protection, cultural walkways, cycling tracks, and recreational spaces. Wildlife conservation and rescue infrastructure are being strengthened. 24 enclosures are open to the public at Jammu Zoo, with 11 more planned, and new species like striped hyenas, zebra, rhino, red panda, and other primates are being added in a graded fashion. The forest and wildlife sector has been allocated 241 crores under capital expenditure, an increase of 60 crores over the previous year. Grain storage projects are being undertaken to create storage capacity at strategic locations. FCI has conveyed in-principle approval for leasing these spaces, thereby creating business opportunities for packs in food grain storage. 3 such storage projects of 1,000 MT at Rajbagh, Kathua, and of 2,500 MT each at Mirhama, Kulgam, and Turkpura, Kupwara are under construction. These facilities will improve price realization for farmers and ensure preservation of food grains. We have also fully operationalized 2 new schemes announced in last year's budget. The cash credit limit scheme for packs will enhance the working capital availability and enhance timely disbursement of short-term credit to farmers. Similarly, the Cooperative Infrastructure Fund has been created to provide
dedicated financial support for building and upgrading cooperative infrastructure. The cooperative sector has been allocated 27 crores under capital expenditure for 26-27. Having outlined the sector-wise priority and budgetary allocations of my government, I now turn to a set of focused initiatives which will directly touch the lives of our people. These measures reflect our commitment to social justice, inclusive growth, and targeted welfare, and are aimed at providing immediate relief and long-term empowerment to the most vulnerable sections of society. My government will enhance budgetary support to the Jammu and Kashmir Trade Promotion Organization to actively promote handicrafts and handloom products through regular buyer-seller meets, creating direct market linkages between local artisans and national and international buyers. This initiative will strengthen market access, branding income opportunities for artisans, and help position Jammu and Kashmir's handicrafts as a globally competitive cultural and economic asset. I am happy to share that we have received financial support of up to 200 crores for the construction of Unity Mall. It will serve as the craft bazaar, providing permanent platform for local products, handicrafts, handlooms, and traditional enterprises from all states and UTs. Under the third component of SASCI, Jammu and Kashmir was allocated 210 crores, which have been leveraged for providing our share of eligible CSS schemes. My government has made rapid progress in financial management reforms by smoothly transitioning all centrally sponsored schemes from treasury mode to Sparsh. We have also mandated the use of Aadhaar-based payments for all DBT CSS. Under Sparsh module rollout, 151 SNA accounts have been opened with Reserve Bank of India. The cyber treasury is fully operational. Sanctions of over 2,500 crores were received and over 23,000 bills have been processed. I propose the modernization of the accountancy training institutes at Srinagar and Jammu with a cost of 10 crores under SASCI framework. My government has submitted a proposal for availing 350 crores under this incentive to build long-term institutional capacity. This initiative will place Jammu and Kashmir among the leading states and union territories in digital financial governance and marks our commitment to a transparent, corruption-free and citizen-centric financial system. My government is fully aware that a number of posts in far-flung and difficult areas remain persistently vacant due to challenging living and working conditions. This affects service delivery in critical sectors such as health, education and administration. I wish to inform this august House that my government is actively contemplating a structured incentive scheme for employees posted in such remote and hardship areas. In such remote and hardship areas, with the objective of improving retention and ensuring equitable access to public services for those citizens living in the most difficult terrains. This initiative will aim to balance the employee welfare with effective governance so that no region of Jammu and Kashmir remains underserved due to staffing constraints. My government will ensure that all industrial units availing any form of government concession, whether in the form of subsidy, electricity or land, must give due priority to employment of local youth from Jammu and Kashmir. So that industrial growth directly translates into jobs, skills and income opportunities for the residents of Jammu and Kashmir. This policy will align investment with inclusive development, ensuring that the benefits of industrialization are shared equitably with local communities and contribute meaningfully to regional prosperity. To support horticulturalists, I announced the implementation of the restructured weather-based insurance scheme. Or the RWBIS in J&K for apple, traditional and high density both, saffron in Kashmir division and mango, lychee
and saffron in Jammu division, in which the sum insured would be 6,594.93 crores. Currently, 68 controlled atmosphere stores with a combined capacity of 2.92 lakh metric tons are operational against the requirement of 6 lakh metric tons. An additional 15,000 metric tons of CA capacity is being added in 25-26 and 38,000 metric ton CA capacity is aimed in 26-27 to ensure balanced regional development and wider dispersal of CA storage infrastructure. I propose to focus top-up subsidy for such CA storage in districts other than the districts of Pulwama and Shupaiya, where CA capacity has now saturated. For achieving this target, 40 CA stores with an investment of 1,400 crores would be needed. Subsidy of 600 crores would be provided by the government, and top-up subsidy shall be available to these CA stores starting from 26-27. The government will provide 25% top-up subsidy for popularizing micro and sprinkle irrigation systems. In the first instance, I have earmarked 116.86 crores for the purpose, which will improve and enhance water use efficiency by 60 to 80% and benefit farmers of 3 lakh hectare land. I am announcing the aromatic and medicinal plan mission with financial outlay of 150 crores. I am allocating 10 crores in the next financial year. This mission will leverage the vast natural resources of Jammu and Kashmir and substantially boost livelihood and income generation opportunities. Jammu and Kashmir has been importing high genetic breed animals from all over the world since the 1980s, but after a few years, we are left with crossbreed animals. Last year, 600 Dorper and Texel sheep from Australia and 40 bulls from USA have been imported. This process will go on in coming years. To ensure high genetic breed remains intact, my government will establish one embryo transfer technology lab in every district by investing 65 crores in a phased manner. I propose to further strengthen rural infrastructure, sanitation and livelihood by supporting converging and optimally leveraging various central government schemes with a special focus on achieving ODF plus status across rural Jammu and Kashmir. To ensure long-term sustainability of these assets, I further propose to leverage district capex funds from 26-27 onwards for engaging capable agencies for professional operation and maintenance of rural sanitation infrastructure so that these facilities remain functional, hygienic and community-owned. My government remains deeply committed to ensuring the safety, comfort and spiritual experience of pilgrims visiting the holy Sri Amarnath Ji Shrine. During 2025-26, over 200 infrastructure projects works for Sri Amarnath Ji Yatra were completed, improving safety and pilgrim experience. I propose to further modernize pilgrim infrastructure with an outlay of 180 crores during 26-27 in partnership with the Border Roads Organization to improve road connectivity, emergency response systems and logistical support. This initiative will ensure that the Sri Amarnath Ji Yatra becomes safer, smoother and more dignified for pilgrims from across the country. My government has launched the JKE Pathshala DTH channel to ensure universal access to quality education for students across Jammu and Kashmir, especially in remote and hilly areas. This free-to-air channel, broadcast through Doordarshan DTH, delivers curriculum-aligned classes from class 1 to 12 without dependence on internet connectivity. 2 dedicated digital studios have been established and over 300 educational videos have already been produced. From next year, we will also develop a class-specific channel through e-Pathshala initiative, which would greatly complement the efforts of our teaching community. My government will introduce indoor games such as chess and carom facilities in all government schools of J&K to promote holistic development of students. This initiative aims to strengthen cognitive skills, strategic thinking,
concentration and decision-making abilities. An amount of 18 crores has been earmarked for this purpose. I propose to upgrade 1,000 Anganwadi centers into modern Bal Vidyalayas at a cost of 72,000 per center, with improved learning spaces, child-friendly infrastructure and enhanced safety standards, so that our youngest children receive a nurturing and stimulating educational environment. I further propose to construct 127 new Anganwadi centers, one in each CDPO block, to bridge critical infrastructure gaps and ensure every child has access to quality early childhood care and nutritional services. I propose an outlay of 70 crores for scholarship support to over 3 lakh tribal students, covering 2.82 lakh pre-metric and 17,000 post-metric scheduled tribe students, so that no tribal child is deprived of education due to financial hardships. To promote forest-based livelihoods, 100 Vandham Dhan Vikas Kendras are being set up under the PM Van Dhan Yojana with an outlay of 15 crores. I propose to further promote tribal homestays in tourism potential areas with financial support of 5 lakhs each per unit to create sustainable income opportunities and community-based tourism models. A pilot community platform for tribal artisans and clusters is being launched with 50 lakhs to improve branding and market access. The extension block of Lalded Hospital in Srinagar will be commissioned in 26-27 at a cost of 180 crores to augment gynecology and obstetrics capacity with 108 additional beds and an NICU facility. We will also introduce the IVF facility in Lalded Hospital. The construction of a 249-bedded mother and child care hospital at GMC Anantnag will be initiated in 26-27. I further propose to establish full-fledged emergency medical departments in all government medical colleges over the next 2 financial years to ensure round-the-clock trauma care, rapid emergency response, and improved survival outcomes for accident victims and critical patients. Cardiology services are being strengthened with the inauguration of 2 new cath labs at GMC Anantnag and Jammu. With further funding, 17 critical care blocks, 2 100-bedded and 12 50-bedded are under construction. I propose to strengthen advanced cardiac care services in Jammu and Kashmir by establishing cath labs at Government Medical College Rajouri and Government Medical College Baramulla during 26-27 at a total cost of 30 crores. A cath lab at GMC Doda for the Chenab Valley will also be taken up. The Food Safety Organization will be strengthened through enhanced testing facility and funding to safeguard public health. In recent years, Jammu and Kashmir has witnessed a concerning rise in the incidence of cancer, posing a serious public health challenge for our people. Recognizing the urgency of this issue, my government will roll out a cancer control strategy for J&K in collaboration with Niti Aayog and ICMR. The focus will be on implementing various interventions and strategies for management of cancer in Jammu and Kashmir and will include collaborations for infrastructure development, training and capacity building. To strengthen peripheral healthcare systems and enhance quality and availability of medical services, my government will implement a time-bound action plan for upgradation of medical services in peripheral medical colleges based on the recommendations of a high-level committee already constituted for this purpose. The focused upgradation will lead to a significant qualitative improvement in healthcare delivery, reduce referrals on tertiary hospitals, and ensure specialized medical services reach people closer to their homes. I propose to establish 2 dedicated emergency and accident hospitals, one at Uri and another at Punch, to strengthen critical healthcare infrastructure in border areas which are prone to shelling, cross-border incidents and natural emergencies.
These hospitals will be equipped to provide 24/7 trauma care, emergency surgery and critical medical services, ensuring rapid medical response during accidents, disasters and security-related incidents. I also propose the purchase of bulletproof ambulances for border districts, starting with 2 ambulances for Poonch and Tangdhar in the next financial year. Last year we had started the free bus service for ladies. I propose to extend this year. I propose to extend the free government transport facility to persons with disabilities. This initiative will allow persons with disabilities better access to mobility. As a measure to ensure a strong social protection framework, I propose to provide full free waiver to all students belonging to AAY families studying in government schools from class 9 to class 12 who are not covered under any other education-related scholarship scheme. This measure will ensure that no child from the poorest household is forced to discontinue secondary education due to financial constraints. The scheme will have a high-impact investment in human capital with minimal fiscal burden. To promote equitable access to higher education for the poorest youth and prevent dropouts at the college level due to economic hardship, I propose to extend full fee waiver to undergraduate students from AAY families studying in government degree colleges who have not received any scholarship assistance under any other scheme. This will ensure that poverty does not become a barrier to academic aspiration. I propose to introduce a sponsorship scheme covering 6,000 orphan children who have lost both parents or their sole breadwinner, having no stable source of income and are not receiving any such benefit from the Mission Vatsalya framework. Each child under this will receive a monthly sponsorship of 4,000 rupees through direct benefit transfer. To support education, nutrition, healthcare and basic living needs. This initiative reflects our government's commitment that no child shall be left behind due to circumstances beyond their control. To reduce the household energy burden on vulnerable families, improve health outcomes by discouraging use of solid fuels, and protect poor households from inflationary pressure, I propose to provide 6 free gas LPG cylinders per year. I propose to provide 6 free LPG gas cylinders per year to all AAY households of Jammu and Kashmir, covering the poorest of the poor. The scheme represents a direct cost of living relief for most deprived sections. Supplementary grant for the current financial year. The original grant for the financial year 25-26 was for 1,40,310 crore gross and 1,12,310 crore net of WMA of 28,000 crores. During the course of the year from 1st April 25 to 31st March 26, an amount of 3,077.04 crores shall be withdrawn in excess of grants in respect of demand number 1, General Administration, 2, Home, 6, Power Development, 7, Education, 8, Finance, 10, Law, 20, Tourism, 32, Horticulture, and 36, Cooperative out of the Consolidated Fund of Jammu and Kashmir to defray expenses on services and purposes required during this purpose. This had been largely necessitated due to expenses related to Darbar move TA, salary arrears, purchase of vehicles, etc.
My government is dedicated to expanding social security for the most vulnerable sections of society while enhancing J&K's competitiveness in the national economy through grassroots level reforms. This budget not only strengthens welfare measures but also drives transformative programs to accelerate infrastructure development, productivity and economic growth, ensuring a more prosperous and inclusive Jammu and Kashmir. We need to ensure that this is done in a fiscally prudent manner. We need to explore every avenue for upscaling revenue generation while enhancing social protection for the poor. We need to ensure cost savings through austerity measures and efficiency measures. We must also improve the impact of public expenditure by leveraging scale, competitive and private initiative. Hence, it is proposed to reduce the rebate on high-speed diesel by 2 litres. This will rationalize the price of high-speed diesel and encourage shift towards cleaner technologies. Even with this reduction of rebate, the high-speed diesel price in Jammu and Kashmir will still be lower than in our neighbouring states like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi. For 26-27, the total gross receipts are estimated at 1,27,767 crores, including the provision for ways and means advances and overdraft of 14,000 crores. Given these receipts, the total gross expenditure is estimated at 1,27,767 crores. The total net budget estimates for fiscal 26-27 are 1,13,776 crores, excluding the provision for ways and means advances and overdraft. This includes 80,640 crores and 33,127 crores under revenue and capital expenditure respectively, under the budget estimates for 26-27, and 90,018 crores and 23,749 crores as expected revenue receipts and capital receipts respectively under budget estimates for 26-27. The own tax revenues, both tax and non-tax our own revenues, both tax and non-tax are estimated at 31,800 crores. In addition to this, 42,752 crores is to flow as central assistance and 13,400 crores as CSS to Jammu and Kashmir. The tax GDP ratio was projected at 7.5% for 25-26. The tax GDP ratio is projected at 6.6% for 26-27. Fiscal deficit for the year 25-26 was estimated to be 2.98%. This was substantially lower than 5.5% in 24-25. The fiscal deficit for the year 26-27 is estimated to be 3.69%, which is substantially higher than 3.63% in 25-26. GDP for the year 25-26 has been projected at 2,88,422 crores, which showed a growth of 9.5% over the previous year. GDP for the year 26-27 has been projected at 3,15,822 crores, indicative nominal GDP, which shows a growth of 9.5% over the previous year. Honourable Speaker, sir, with these words, I commend the budget for the financial year 26-27 of Jammu and Kashmir to this August House for consideration. Thank you. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की बजट तकरीर आपने सुनी। इसकी कॉपी ऐवान की मेज पर रखी जाती है।
करेंगे और इनकी जो एरिया की सेविंग होगी। DPR लेवल पे कितने हैं प्रोसेस? 2025 was designated as J&K Green Mission to drive community-led environment stewardship and plantation. The rural sector has been allocated 3,456 crores under capital expenditure for 26-27, an increase of 40 crores from the revised allocation of 25-26. My government considers tourism as a key pillar of economic growth and livelihood generation in Jammu and Kashmir. Despite the challenges faced during the year, including the unfortunate Pahalgam incident and subsequent floods, Jammu and Kashmir recorded over 1.61 crore tourist visits in 25-26, reflecting the resilience and continued confidence in our destination. I propose to build a sustainable, inclusive and year-round tourism economy, balancing infrastructure development with environmental conservation and community participation. Our focus will be on developing new world-class tourist destinations, strengthening tourism circuits, and positioning Jammu and Kashmir as a global tourism brand with financial and technical support from the Ministry of Tourism, Government of India. Environmental infrastructure has been prioritized with sanctioning 3.2 million lakh MLD STP at Gulmarg and starting of upgradation of solid waste management plant. Similar measures are planned at Sonmarg for reinforcing protection of the fragile ecosystem. My government is also working on restoration of heritage sites and shrines through the Culture Department. This initiative will aim to preserve cultural identity, boost local economies through tourism, and strengthen community pride. For diversification of tourism towards winter sports, water sports, and adventure tourism, procurement and execution of supportive infrastructure is underway. Water sports facilities at Wular Manasbal and Bani Basoli are being developed. Sports tourism is also being promoted through strategic investments. The Kashmir Marathon and Jammu Marathon are placing J&K on the national and international sporting map. The second Kashmir Marathon 2025 with a 3-day expo recorded over 3,000 registrations with participation from 27 states and union territories and 11 countries. We garnered 2.11 crore in sponsorships and 0.20 crores in registration fees, validating its economic and promotional potential. In 2026, we will be organizing an international film festival in association with the National Film Development Corporation. This festival will bring world cinema to Jammu and Kashmir, promote cultural diversity and stimulate the local economy. We have launched J&K Tourism mobile app for offering verified real-time information, integrated booking services and AI-based assistance. This will become the entry point for tourists, providing comprehensive support and boost business opportunities for local hotels and entrepreneurs. The homestay policy addressed peak season accommodation shortages while empowering local households. We have established over 1,600 registered homestays in Kashmir division and 300 plus in Jammu division. We have partnered with J&K Bank to provide concessional assistance for such homestays, which will be popularized through our portals and J&K Tourism mobile app. Skill development and entrepreneurship form a core pillar of government's employment strategy in Jammu and Kashmir. We intend to launch a skill mission to equip our youth with superior skills. For this, skill and entrepreneurship framework will be developed, covering foundational skilling, internships, and industry-ready technical skilling. The mission will emphasize upgradation of polytechnics and ITIs, on-the-job training opportunities, and lifelong learning. The tourism and youth affairs sector has been allocated 472 crores under capital expenditure for 26-27, an increase of 61 crores from the revised allocation of 25-26. My government accords high priority to the preservation, restoration and promotion of our rich cultural and heritage assets, which are central to the identity, history and tourism potential of Jammu and Kashmir. During 26-27, provision has been made for completion of all ongoing projects under Phase 1 of the Heritage Revival, Restoration and Maintenance Scheme, and for fast-tracking the execution of approved projects under Phase 2 and Phase 3. I further propose to ensure comprehensive coverage of heritage conservation, including execution of heritage projects of the Tourism Department across Jammu and Kashmir and the value-based restoration of the Mughal-era Nishat Garden in Srinagar. I also propose to expedite the modernization of the SPS Museum, strengthen and modernize the public library network,
and expand inclusive cultural infrastructure through establishment of new cultural centers at Bandipur, Shopaiya, Anantnag, Kishtwar, Udhampur, Poonch and Budgam. In addition, enhanced budgetary support will be provided to the J&K Academy of Art, Culture and Languages to promote youth engagement through cultural programs and national initiatives, ensuring that our cultural heritage remains vibrant, accessible and future-oriented. The Culture Department has been allocated 109 crores under capital expenditure for 26-27. Despite the challenging environment, the industry sector recorded strong progress during 25-26. Reflecting investor confidence. Since 2020, 2,227 industrial units in the organized sector involving an investment of 15,940 crores and generating employment for 73,827 persons have commenced production. Investment grounding reached an all-time high of 5,260 crores till December 2025. Under the new central sector scheme of 28,400 crores, 971 applications involving 14,292 crores were registered, with 87% of new and expansion units commencing production. Claims of 403 crores were approved under NCSS, taking cumulative approvals to 840 crores. For the 2026-27, amendments to the J&K Industrial Policy 2130 are proposed to sustain industrial growth post-NCSS, ensuring continued employment and income security. My government is taking decisive measures to support medium and small enterprises and facilitate ease of doing business. I propose to introduce a self-certification scheme for MSMEs under which enterprises will receive a single in-principle approval with a 3-year grace period for clearances, enabling them to start operations without procedural delays and compliance bottlenecks. I further propose to extend incentives to SIC MSMEs at par with new industrial units so that viable enterprises are revived, existing jobs are protected and business closures are prevented. Reimbursement of CGTMSE, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, guarantee fees up to 10 lakh loans were approved with an allocation of 41.30 crores. Jammu and Kashmir secured the 5th rank in ease of doing business in November 2025. The first ever MSME health clinic was launched by IIM Jammu, covering 417 units, which focused revival plans underway for 70 sickness-prone MSMEs. MSME formalization surged, with Udyam registrations rising from 0.24 lakh in 2021 to 5.85 lakh in 25-26, and a target of 7.1 lakhs has been set by 2027. We received the National MS-EFC Excellence Award for online and timely MSME dispute resolution. The startup ecosystem expanded from 69 startups in 2020 to 1,342 in 25-26, including 490 women-led ventures. A new startup policy was launched and 18 startups were sanctioned, seed funding of 20 lakhs each. Over 1,100 ideas were generated through boot camps and outreach. Enhanced allocations are proposed in 26-27 for upgrading infrastructure in existing industrial estates to support MSMEs. Startup support will be strengthened through high budgetary allocations, incubators and co-working spaces in Srinagar and Jammu. To sustain rural self-employment, higher allocation is proposed under the J&K Rural Employment Generation Program for the year 26-27. The handloom and handicraft sector provides direct and indirect employment for nearly 4.45 lakh individuals, primarily from economically weaker sections. GI certification capacity increased 5-fold. 8 new crafts were GI registered in 2025 and 17 more are in advanced stages. We are strengthening QR code-based certification and testing infrastructure. We won the National ODOP Gold Award for the 2nd consecutive year. Artisan credit card saturation is being pursued aggressively, with 21.06 crores disbursed to 1,011 artisans during 25-26. Our
4 artisans received national honours, including the Shilp Guru Award and the National Awards for Handicrafts. The industry and handicraft sector has been allocated 461 crores under capital expenditure for 26-27, an increase of 137 crores from revised allocations of 25-26. The Institute of Driving, Training and Research, or IDTR at Kot Balwal, will be made operational this year for professionalizing road safety in Jammu. The IDTR will be equipped with 7 automated driving tracks and state-of-the-art machinery, ensuring that every new driver is trained to the highest national safety standards. In parallel, the transition to automated testing stations, or ATS, is underway to ensure vehicle fitness and commuter safety while protecting the environment. This technology-driven approach involves electronic evaluation of brakes, suspension and emissions, replacing manual fitness testing. Registration certificates have already been issued to private operators, with the first ATS operational since September 25. The Inspection and Certification Centre at Samba will soon be commissioned to serve as a government sector hub for automated testing. JKRTC continues to provide uninterrupted transport for passengers and food grains and horticulture products, reinforcing its role as a reliable and resilient public transport and logistics provider. We need to strengthen inter-district transportation, particularly in rural and underserved areas, to provide reliable, comfortable and affordable services. The revival of Jammu and Kashmir Road Transport Corporation will be a key focus of 26-27. As part of a green mobility initiative under the PM E-Drive scheme, 200 electric buses are planned to be inducted with an estimated investment of 350 crores, replacing aging diesel fleets with modern zero-emission vehicles. To further strengthen JKRTC's commercial and logistical capacity, 50 new trucks will be procured under SASKI funding of 75.70 crore. The transport sector has been allocated 21 crores under capital expenditure for 26-27. While we are blessed with unique mineral wealth, it is important that it is harnessed transparently and sustainably. Hence, we are implementing the integrated mining surveillance system in collaboration with BISAC-N. This system will enable satellite-based monitoring of mining areas, generate real-time triggers on illegal mining activity, and share this with enforcement officers for prompt verification and legal action. The first phase of IMSS has been operationalized, and over 110 triggers have been generated for technology-driven action for curbing illegal mining. To strengthen on-ground enforcement, e-challan machines have been introduced in collaboration with J&K Bank for issuing on-the-spot challans to violators. The first ever auction process for the 7 limestone mineral blocks in Jammu and Kashmir marks a significant step in implementing mining reforms. This will enable transparent digital auctions for mineral resource allocation and boost our revenues. The mining sector has been allocated 4 crores under capital expenditure, an increase of 2 crores from the previous year. Significant upgradation of health infrastructure in the recent years has improved public healthcare delivery and medical education. More than 4,000 health infrastructure facilities have been developed, including 15 medical colleges, 2 AIIMS and 2 state cancer institutes. The new 160-bedded block at the Bone and Joint Hospital, Srinagar, with a cost of 140 crores, has been operationalized since July 2025. The commissioning of the 100-bedded Mother and Child Care Hospital at Lamberi, Rajouri, upgradation of SDH Bilawar to a 100-bedded facility, construction of a 50-bedded hospital at Sundarbani, upgradation of the 100-bedded hospital at Naushera, and the 125-bedded district hospital at Reshipura, Badgam has been accelerated. To strengthen diagnostics, the process for installing 1.5 Tesla MRIs in the new GMCs and 3 Tesla MRIs at GMC Jammu, GMC Srinagar and SKIMS has been initiated. Installation of CT scan machines is underway in major hospitals like DH Badgam, SSH Srinagar, DH Poonch, SMGS Jammu, CD Hospital Jammu and SMHS Srinagar. This initiative will be further expanded. PET scan facilities will be installed at GMC Srinagar and extended to GMC Kathua during 26-27 to enhance cancer diagnostics. Mobile medical units and mobile dental units are proposed to improve outreach in far-flung areas.
The Sehat app has been launched to enhance healthcare delivery by integrating services, providers and patients on a single digital platform. More than 16 lakh users have started seeking benefits on this app. Digital health and remote care are being upgraded with provision of 32 crores for establishing 80 telemedicine centers and enabling clinical consultation in far-flung regions. De-addiction OPDs are functional and 6 new facilities are under construction to expand de-addiction support. Construction of homeopathic college at Rakh Hoshiari, Kathua and Ayurvedic College at Amargarh, Sopore will commence in 26-27 to expand Ayush education and care options. All 523 Ayushman Arogya Mandirs dedicated to Ayush services have been fully operational across Jammu and Kashmir, providing Ayush therapies and preventive health interventions. Ayush infrastructure has been expanded by commissioning the 10-bedded integrated Ayush hospital at Jammu and Government Ayurvedic Hospital at Kulgam. Medical education has been strengthened. During the current year, 548 medical seats will be added, comprising 340 MBBS, 128 PG, 34 PG Ayurveda and 46 DNB seats. AIMS Kashmir will be commissioned by June 2026. GMC Srinagar and GMC Jammu have each been allotted 20 additional MBBS seats. Further, GMC Doda, GMC Anantnag, GMC Baramulla and GMC Kathua have been allotted 50 additional MBBS seats, thereby expanding pool of medical professionals. Quality nursing education will be enhanced through creation of trained manpower in 10 nursing colleges. With the unprecedented approval of 240 MBBS and 120 PG seats, infrastructure of all GMCs will be strengthened in the financial year 26-27 with a budget of 216 crores. The health and medical education sector has been allocated 1,866 crores under capital expenditure. Path-breaking reforms have been undertaken in the education sector to ensure comprehensive implementation of the national education policy. To strengthen early childhood education, pre-primary classes have commenced in 15,550 schools. We provisioned 30 crores for establishing 5,000 kindergartens with child-friendly infrastructure. In 25-26, 1,735 kindergartens were set up, 7,672 schools received child-friendly furniture. Additionally, 188 modern kindergarten buildings costing 122 crores have been sanctioned under Samagra Shiksha. School infrastructure is being upgraded with 396 schools being developed as exemplar schools under PM Shri. Further, 762 additional classrooms worth 160 crores have been approved. To promote future-ready learning, ICT facilities will be established in 2,036 schools. 4,200 smart classrooms are being commissioned under Samagra Shiksha and PM Shri. Innovation capacity is being expanded with the ongoing 172 Atal Tinkering Labs and proposed 500 ATLs. Skill-linked education and governance reforms are progressing in parallel. Vocational education has been introduced in 554 schools with 2,294 vocational trainers. Further, 2,214 vocational trainers are under implementation. Teaching capacity is being enhanced with 594 lecturer vacancies being referred for recruitment. Further, 2,217 schools are being solarized. To enhance monitoring and learning outcomes, District Vidya Samiksha Kendras are being set up for educational analytics. The reforms launched by our government have led to significant improvements in school education results in 25-26, with Class 10 and Class 12 pass percentages reaching roughly 85%, marking one of the best performances in recent years. Key improvements include increased high-performing girl student passing rates of 86% and a notable rise in government school performance. My government is undertaking crucial initiatives in higher sector education to make our youth skillful and competitive. The 4-year undergraduate program is being universalized
In all degree colleges, records of 34.50 lakh students of class 10, 11 and 12 have been uploaded on DigiLocker by JK Bose as part of the Digital Transformation Initiative. Additionally, 74 government degree colleges were upgraded with NAC accreditation to enhance quality of education infrastructure in Jammu and Kashmir universities is being strengthened with support under RUSA 1 and 2. The key initiatives and priorities of the Higher Education Department will aim at development of classrooms, laboratories and libraries for universities, colleges and improvement of autonomous affiliated colleges and development and upgradation of their sports infrastructure. All colleges in Jammu and Kashmir. लेकिन सबसे अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि जो जितने भी हमारे नाक़िदीन हैं, यानी जो हमारे क्रिटिक्स हैं, उनको हम अपनी बजट से ही एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, आपने महिलाओं और युवाओं का जिक्र किया, तो उसमें मैं बता दूं कि बजट 2026-27 के लिए मिशन युवा, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके मिशन युवा के बजट को भी बढ़ाया गया है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो पूरी तरह से सामने आने बाकी हैं, लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें यहां पर क्या रही वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, और क्योंकि यूनियन बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हिमालयन ट्रेल्स है उस पर पैसा खर्चा जाएगा, 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, तो उसी से कहीं जोड़कर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तालमेल खाता है और यहां से बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। पोल्ट्री और डेयरी को लेकर डिपेंडेंसी कम करने का जिक्र भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है। पोल्ट्री फार्म्स, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स है, 800 कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर। 5000 बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जो बैकयार्ड होंगे, यानी कि जो पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। कृषि क्षेत्र के लिए 1800 करोड़ का बजट है। 1800 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर के लिए है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात, और सबसे बड़ी बात, डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, आश्वासन दिया है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर भी जो सरकार है वो अब कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर एक खाका तैयार करेगी, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए जरा, किस तरह से इस बजट को डिकोड किया जा रहा है, रिएक्शन किस तरह से अब आ रहे हैं सामने? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे युवाओं को जो है वो ध्यान में रख के जो है काफ़ी अनाउंसमेंट जो है एलोकेशंस की बात कही गई है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी एलोकेशंस की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये एक खास कदम हो सकता है। मेरे साथ एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी जो है वो मौजूद हैं। आप इस तरह जो घोषणाएं आज हुई हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है ट्रेड को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, आप कितना मुतमईन इससे? देखिए, जिस प्रकार से आज का जो बजट हमने देखा है, ध्यान में आया कि जिस प्रकार से आज घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की है, इसके अंदर हम देखें तो युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, कौशल विकास के विषयों को लेकर और महिलाओं को लेकर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की कि 257 लाख उसके लिए भी 57 उसके लिए भी इसके अंदर दिए गए हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से उसके अंदर बात की गई है कि हम कौशल विकास को लेकर हम काम करने का काम करेंगे, हम नई नौकरियां जो खाली रिक्त पद हैं उनको भरने का लेकर हम प्रयास करेंगे। इन सब विषयों को लेकर जो बजट के अंदर ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। और ये तो बजट के अंदर बातें आज रख दी गई हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट कितना रहेगा वो एक बहुत देखने वाला विषय हमारे लिए भी रहेगा। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी सरकार अपना प्रयासरत है, और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। क्योंकि पिछले साल जो पहला बजट जो पेश किया था चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने, क्या आपने उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो पार्ट पे भी ध्यान देना होगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम पिछली बार वर्ष भी हमने देखा कि एनएलयू के लिए 50 करोड़ इसके अंदर सेक्शन किए गए थे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो उसके अंदर 1 रुपया भी उसका आज तक भी खर्च नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि जिसको बजट के अंदर रखा जाता है उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट उसको ग्राउंड लेवल पर करना है, उस विषय को लेकर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे, जो आम जनमानस है जम्मू का, वो किस तरह से देखता है जो वादे किए गए हैं, बिजली की समस्या को दूर करने की, बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, स्मार्ट मीटर्स ताकि बिजली की जो ज्यादा खपत होती है उसको कम किया जाए, उसके साथ साथ बिजली पानी जो है जो जल पहुंचाने की बात की गई है, आप कितना मुतमईन हैं?
देखिए, सरकार की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए, हमारा मुल्क जो है वो 77वां मतलब 75 से ऊपर आज़ादी के साल मना चुका है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बस यही समस्या लेकर बैठे हुए हैं। समस्याओं में से एक भी समस्या जो है वो पूरी तरह हल नहीं हो सकी, और नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन के जो है वो उभर रहा है, जिससे हमारी पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी जो है वो बेचारी पूरी तरह से परेशान है कि वो क्या करे क्या ना करे। बहुत सारे हमारे सूबे हैं जिसमें हमारे नौजवान लोगों ने एक साइड पे होके गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़ के अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया था, जैसे हमारा दूरदर्शन था। दूरदर्शन में बहुत सारे कलाकारों ने अपनी रोजगार छोड़ के, अपनी गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ के उस शोबे को अपनाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी यहां से चलेगी। लेकिन सरकार ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें की, कभी हमें बोला डुग्गर चैनल बन गया, कभी बोला रुक गया। मतलब अभी तक जो सारे कलाकार हैं, नौजवान पीढ़ी जो आने वाली है, वो सारी की सारी परेशान बैठी हुई है। देखिए, कोई बड़ा मिनिस्टर आता है तो आके बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें कर जाता है, हम ये कि आप चाहते हैं कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो भी होना चाहिए, रोजगार के लिए कदम उठाना चाहिए। एक युवाओं को जिस तरह से स्टार्टअप्स को लेकर भी जो है वो बातें की गई हैं, जो अपना रोजगार जो है वो चलाता है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उस तरह की कोशिशें भी करने की बात की गई है। देखिए, इसके अंदर इस प्रकार से बिल्कुल राजन, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर डेली वेजर्स को लेकर सामने आ रही है। डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन हमने साल भर देखा, और अब डेली वेजर्स को नियमित करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। और ये बहुत बड़ा ऐलान है जैस्मिन, जिस डेली वेजर्स को लेकर के लगातार सरकार जो है सवालों के घेरे में थी, और उन डेली वेजर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान, साथ ही युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान है। वो युवा जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी के इंतजार में हैं, 23,000 जो भर्तियां हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और ये 23,000 भर्तियां जो हैं वो साल भर के अंदर पूरी की जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है युवाओं के लिए। बिल्कुल। और इस बीच डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि किस तरह 2025 से 26 के बीच डेली वेजर्स ने जमकर प्रदर्शन किए। 1 लाख के आसपास डेली वेजर्स की संख्या है जो जम्मू कश्मीर में 27 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं। और ऐसे में डेली वेजर्स को लेकर जो रेगुलराइजेशन की बात यहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही है, ये 2 दशकों के बाद ऐसा होगा कि अगर वाकई इस फैसले पर मोहर लग जाती है तो 2 दशकों से विशाल डेली वेजर्स जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुछ डेली वेजर्स उनके साथ संभवतः मौजूद हैं। जहूर, डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान। यास्मीन, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री की तरफ से। जो अभी बजट पेश हुआ ऐवान में, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नॉर्म्स को अप्लाई करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद जो है रेगुलराइजेशन का अमल शुरू किया जाएगा। हमारे साथ चूंकि बात करने के लिए मौजूद हैं जो फहमीदा अख्तर हैं, और एक एक्टिविस्ट रही है पहले से ही, और इन्हें बड़ी मेहनत की है पहले से ही कि किस तरह से जो आंगनबाड़ी है, हेल्पर्स, और इनने हमेशा से बात की है। फहमीदा जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने अभी बजट ऐवान में पेश किया, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे? या आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम में इजाफा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमें पहले ही पता था कि वो कुछ ना कुछ हम डेली वेजर्स के लिए और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के लिए वो कुछ ना कुछ करने वाला है। इसलिए हमने जो श्रीनगर में हमने जो उसको जो रोज दिखाया है कि हम 30 साल 40 साल से सड़कों पे रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, क्योंकि हम गरीब तबके से हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स। इसलिए हमें भरोसा है अपनी हुकूमत पे, अपने चीफ मिनिस्टर साहब पे, और जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर मैडम है, तो हमें विश्वास था कि इस बजट में कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा। हमारे साथ एमएसएमई के प्रेसिडेंट भी हैं बशीर साहब, ये बताइए कि ये जो सामने आई है एक बात बहुत बड़ा खुलासा कि चीफ मिनिस्टर ने जो ऐवान में कहा कि जो डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट करने का अमल शुरू किया जाएगा कंसल्टेशन के बाद, और इसमें जो भी लवाजमात है उनको पूरे करने के बाद डेली वेजर्स का अमल पूरा किया जाएगा। ये तो एक खुशाइंद बात है, क्योंकि
इन्होंने जो हमारी सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम डिलीवरीज की जो मसाइल है उनको हल करने की, ये उसकी तरफ एक कदम है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो भी वादा इस सरकार ने किया है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह जरूरी। खासकर मैं इंडस्ट्रीज की तरफ जाऊंगा, जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो तो रोजगार मुहैया करती है जी, उस गवर्नमेंट को इससे बहुत फायदा होगा। अगर जो तो चीफ मिनिस्टर ने सिख इंडस्ट्रीज को भी रिज्यूनेट करने की बात की और एमएसएमई को भी जो है ना उसमें डेवलपमेंट की बात की। इसमें पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी चलाई थी, यहाँ से हम यहाँ जो हमारे इंडस्ट्री स्टेट्स है या बाकी जो आउटसाइडर यूनिट होल्डर्स हैं उनसे बात की, उन्होंने वो उसका पूरा संज्ञान लेके आज पहली बात इंडस्ट्रीज के बारे में की, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये वो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह मेवा सनत रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की, उसी तरह लोकल इंडस्ट्रीज भी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हमारा जो यहाँ जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौसम से मुतल्लिक या बाकी जो मामलाते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की बहुत जरूरत है, जिससे वेदर बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम का भी जिक्र किया है, जो ये भाई साहब बात कह रहे हैं। यहाँ मार्केट जो चीफ मिनिस्टर ने अभी वेदर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज है, उसमें काफी एक जो है लाभ हो सकता है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह सजाद साहब ने अभी कहा, हमें यहाँ जो स्टोरेज है यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। एक तो प्राइवेट से तो बना रहे हैं, मगर हमें चाहिए कि यहाँ सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट उससे जो हमारे तो आपको लगता है कि वेदर बेस्ड जो सिस्टम अलर्ट है या फिर बाकी चीजें जो हैं टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि हमें यूजुअली पता नहीं होता है कि कब जालाबारी होगी, कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें हो सकती है, कहीं ना कहीं इससे लाभ हो सकता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट तो यहाँ बन रहे हैं मगर गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको वहाँ कम पैसा पड़ेगा वहाँ पर स्टोरेज करने का, जो हमारे मेवा आपको जैस्मीन बताऊं कि हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं यहाँ अनंतनाग के सजाद हकीम। सजाद साहब, ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो ये बजट जो है क्या माने रखता है आम लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये पीपल फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको जा रहे हैं। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। बिल्कुल, और एएवाई परिवार के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है, यानी कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। परिवार को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है एएवाई परिवारों के लिए। अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में किया है। गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। और सीधे रुक कर लेते हैं लाल चौक का सरोज, न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। सरोज, आम जनता से जुड़ा हुआ पूरा बजट गरीब तबके का ख्याल रखा है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात है जो इस बजट में छूटी हो? और सबसे बड़ी बात यह कि सरोज, युवाओं को भी टारगेट किया है। युवाओं के लिए 23,000, यानी पढ़े लिखे जो युवा हैं, 23,000 जो असामियां हैं, सरकारी नौकरी खाली है, साल भर के अंदर उसको भरने की बात की गई है। सरोज, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी एक तरीके से पुश किया गया है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने सामने रखी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बताते चले, साथ ही साथ आपने एएवाई के हवाले से बात की है, डेली वेजर्स के हवाले से बात किया। ओवरऑल आप देखिए थ्रस्ट जो है इस बार वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे है। 8 ऐसे बड़े क्लस्टर्स आएंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। एक मटन का क्लस्टर है जो श्रीनगर को मिलेगा, वही चेरी का क्लस्टर है गांदरबल को मिलेगा, फिशरीज का क्लस्टर है वो गांदरबल को मिलेगा, वही जम्मू खिते में जैसे बासमती राइस माना जाता है जम्मू खिते में वो क्लस्टर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के हवाले से भी बात करें तो कारखानदार स्कीम जो है उसको इस बार प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो ये आर्टिसंस है इनको कहीं ना कहीं डिपेंड ना रहना पड़े शॉपकीपर्स पे, ये अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। साथ ही साथ इनको कुछ कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसे हम एक क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो इन आर्टिसंस को दिया जाएगा जिस पर ये परचेजिंग कर सकते हैं। अगर इनको थ्रेड खरीदना है शॉल्स के लिए, सुइयां खरीदनी है या चिजल खरीदना है,
तो उसके लिए इनको एक रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपने एएवाई की बात की है, यहां पर एएवाई को पिछले बजट में ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इस बार उन्होंने अब फिर से वादा किया है। एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल सही कहा आपने कि 4000 रुपए तक इनको कोचिंग की फीस दी जाएगी, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोचिंग फ्री रहेगी और वही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री रहेगी। लेकिन अब यह देखना है, जब तक कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशरीज कौन है। एएवाई के जुमरे में कितनी परसेंटेज आती है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की, और कितने लोग जो है वो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे जो आज ये पॉलिसीज या स्कीम सामने रखी गई है। और गैस सिलेंडर का भी ऐलान किया है सरोज की एएवाई जो परिवार होंगे, जो खानदान होंगे, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बट विशाल यही देखिए ना, अब जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जो 2026 में अभी होने वाला है, तब तक आप किस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे। जैसे खुद एनसी गवर्नमेंट कहती है कि फ्री मीटर्स तभी लग पाएंगे जब तक एक बार पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता, तब जाके पता लग पाएगा कि कितने लोग डिजर्विंग है, कितने लोग एएवाई के जुमरे में आते हैं, बीपीएल के जुमरे में आते हैं या अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसलिए इस वक्त इस बजट पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ग्राउंड पे, वो देखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स के हवाले से बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, डेली वेजर्स की तो रेगुलराइजेशन की बात बोल दी है। 72,000 रेगुलर डेली वेजर्स है, जैसा अभी जैस्मिन भी कह रही थी, करीबन 29 डिपार्टमेंट से है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन होगी, ये एक साथ इन 72,000 डेली वेजर्स की नहीं होगी। इनसे एक मीटिंग बुलवाई गई थी जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से एसोसिएशन मिली थी ईजैक की, जहां पर कहा गया कि हर साल 10 से 12,000, मैं आपको फिर से जिम्मेदारी से बताऊं कि हर साल 10 से 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ना कि इसी साल पूरे 72,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि जो जितने भी हमारे नाक़िदीन हैं, यानी जो हमारे क्रिटिक्स हैं, उनको हम अपनी बजट से ही एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, आपने महिलाओं और युवाओं का जिक्र किया, तो उसमें मैं बता दूं कि बजट 2026-27 के लिए मिशन युवा, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके मिशन युवा के बजट को भी बढ़ाया गया है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो पूरी तरह से सामने आने बाकी हैं, लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें यहाँ पर क्या रही वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, और क्योंकि यूनियन बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हिमालयन ट्रेल्स है उस पर पैसा खर्चा जाएगा, 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, तो उसी से कहीं जोड़कर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तालमेल खाता है और यहां से बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। पोल्ट्री और डेयरी को लेकर डिपेंडेंसी कम करने का जिक्र भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है। पोल्ट्री फार्म्स, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स है, 800 कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर। 5,000 बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जो बैकयार्ड होंगे, यानी कि जो पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। कृषि क्षेत्र के लिए 1800 करोड़ का बजट है, 1800 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर के लिए है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात, और सबसे बड़ी बात, डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, आश्वासन दिया है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर भी जो सरकार है वो अब कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर एक खाका तैयार करेगी, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए जरा, किस तरह से इस बजट को अब डिकोड किया जा रहा है, रिएक्शन किस तरह से अब आ रहे हैं सामने? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे युवाओं को जो है वो ध्यान में रख के जो है काफ़ी अनाउंसमेंट जो है एलोकेशंस की बात कही गई है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी एलोकेशंस की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक खास कदम हो सकता है। मेरे साथ एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी जो है वो मौजूद हैं। आप इस तरह जो घोषणाएं आज हुई हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है ट्रेड को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, आप कितना मुतमईन इससे? देखिए, जिस प्रकार से आज का जो बजट हमने देखा है, ध्यान में आया कि जिस प्रकार से आज घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की है, इसके अंदर हम देखें तो युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। कौशल विकास
के विषयों को लेकर और महिलाओं को लेकर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की कि 257 लाख उसके लिए भी 57 उसके लिए भी इसके अंदर दिए गए हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से उसके अंदर बात की गई है कि हम कौशल विकास को लेकर हम काम करने का काम करेंगे, हम नई नौकरियां जो खाली रिक्त पद हैं उनको भरने का लेकर हम प्रयास करेंगे। इन सब विषयों को लेकर जो बजट के अंदर ध्यान दिया है कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। और ये तो बजट के अंदर बातें आज रख दी गई हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट कितना रहेगा वो एक बहुत देखने वाला विषय हमारे लिए भी रहेगा। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी सरकार अपना प्रयासरत है और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। क्योंकि पिछले साल जो पहला बजट जो पेश किया था चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने, क्या आपने उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो पार्ट पे भी ध्यान देना होगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम पिछली बार वर्ष भी हमने देखा कि एनएलयू के लिए 50 करोड़ इसके अंदर सेंक्शन किए गए थे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो उसके अंदर 1 रुपया भी उसका आज तक भी खर्च नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि जिसको बजट के अंदर रखा जाता है उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट उसको ग्राउंड लेवल पर करना है, उस विषय को लेकर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे जो आम जनमानस है जम्मू का, वो किस तरह से देखता है जो वादे किए गए हैं बिजली की समस्या को दूर करने की, बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, स्मार्ट मीटर ताकि बिजली की जो ज्यादा खपत होती है उसको कम किया जाए, उसके साथ साथ बिजली पानी जो है जो जल पहुंचाने की बात की गई है, आप कितना मुतमईन हैं? देखिए, सरकार की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उन पर अमल करना बहुत जरूरी होता है। अभी देखिए, हमारा मुल्क जो है वो 77वां मतलब 75 से ऊपर आजादी के साल मना चुका है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बस यही समस्या लेकर बैठे हुए हैं। एक भी समस्या जो है वो पूरी तरह हल नहीं हो सकी और नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन के जो है वो उभर रहा है, जिससे हमारी पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी जो है वो बेचारी पूरी तरह से परेशान है कि वो क्या करे क्या ना करे। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिसमें हमारे नौजवान लोगों ने एक साइड पे होके गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़ के अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया था। जैसे हमारा दूरदर्शन था, दूरदर्शन में बहुत सारे कलाकारों ने अपनी रोजगार छोड़ के, अपनी गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ के उस शोबे को अपनाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी यहां से चलेगी। लेकिन सरकार ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें की, कभी हमें बोला डुग्गर चैनल बन गया, कभी बोला रुक गया। मतलब अभी तक जो सारे कलाकार हैं, नौजवान पीढ़ी जो आने वाली है, वो सारी की सारी परेशान बैठी हुई है। देखिए, कोई बड़ा मिनिस्टर आता है तो आके बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें कर जाता है, हम ये कि आप चाहते हैं कि जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो भी होना चाहिए, रोजगार के लिए कदम उठाना चाहिए। एक युवाओं को जिस तरह से स्टार्टअप्स को लेकर भी जो है वो बातें की गई हैं, जो अपना रोजगार जो है वो चलाता है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उस तरह की कोशिशें भी करने की बात की गई है। देखिए, इसके अंदर इस प्रकार से बिल्कुल राजन, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर डेली वेजर्स को लेकर सामने आ रही है। डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन हमने साल भर देखा और अब डेली वेजर्स को नियमित करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। और ये बहुत बड़ा ऐलान है जास्मिन, जिस डेली वेजर्स को लेकर के लगातार सरकार जो है सवालों के घेरे में थी, और उन डेली वेजर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान, साथ ही युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान है। वो युवा जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी के इंतजार में हैं, 23,000 जो भर्तियां हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और ये 23,000 भर्तियां जो हैं वो साल भर के अंदर पूरी की जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है युवाओं के लिए। बिल्कुल। और इस बीच डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि किस तरह 2025 से 26 के बीच डेली वेजर्स ने जमकर प्रदर्शन किए। 1 लाख के आसपास डेली वेजर्स की संख्या है जो जम्मू कश्मीर में 27 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं। और ऐसे में डेली वेजर्स को लेकर जो रेगुलराइजेशन की बात यहां पर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कही है, ये 2 दशकों के बाद ऐसा होगा कि अगर वाकई इस फैसले पर मोहर लग जाती है तो 2 दशकों से विशाल डेली वेजर्स जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुछ डेली वेजर्स उनके साथ संभवतः मौजूद हैं। जहूर, डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान। यास्मीन, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री की तरफ से। जो अभी बजट पेश हुआ ऐवान में तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नॉर्म्स को अप्लाई करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद जो है रेगुलराइजेशन का अमल शुरू किया जाएगा। हमारे साथ चूंकि बात करने के लिए मौजूद हैं जो फहमीदा अख्तर हैं और एक एक्टिविस्ट रही है पहले से ही, और इन्हें बड़ी मेहनत की है पहले से ही कि किस तरह से जो आंगनबाड़ी है, हेल्पर्स, और इनने हमेशा से बात की है।
फहमीदा जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने अभी बजट ऐवान में पेश किया, डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे? या आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम में इजाफा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमें पहले ही पता था कि वो कुछ ना कुछ हम डेलीवेजों के लिए और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के लिए वो कुछ ना कुछ करने वाला है। इसलिए हमने जो श्रीनगर में हमने जो उसको जो रोज दिखाया है कि हम 30 साल 40 साल से सड़कों पे रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, क्योंकि हम गरीब तबके से हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स। इसलिए हमें भरोसा है अपनी हुकूमत पे, अपने चीफ मिनिस्टर साहब पे और जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर मैडम है, तो हमें विश्वास था कि इस बजट में कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा। हमारे साथ एमएसएमई के प्रेसिडेंट भी हैं बशीर साहब, ये बताइए कि ये जो सामने आई है एक बहुत बड़ा खुलासा कि चीफ मिनिस्टर ने जो ऐवान में कहा कि जो डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट करने का अमल शुरू किया जाएगा कंसल्टेशन के बाद, और इसमें जो भी लवाजमात है उनको पूरे करने के बाद डेली वेजर्स का अमल पूरा किया जाएगा। ये तो एक खुशायन बात है, क्योंकि इन्होंने जो हमारी सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम डेलीवेज की जो मसाइल है उनको हल करने की, ये उसकी तरफ एक कदम है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो भी वादा इस सरकार ने किया है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह जरूरी। खासकर मैं इंडस्ट्रीज की तरफ जाऊंगा, जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो तो रोजगार मुहैया करती है, उस गवर्नमेंट को इससे बहुत फायदा होगा। अगर जो तो चीफ मिनिस्टर ने सिख इंडस्ट्रीज को भी रिज्यूनेट करने की बात की और एमएसएमई को भी जो है ना उसमें डेवलपमेंट की बात की। इसमें पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी चलाई थी, यहाँ से हम यहाँ जो हमारे इंडस्ट्री स्टेट्स है या बाकी जो आउटसाइडर यूनिट होल्डर्स है उनसे बात की, उन्होंने वो उसका पूरा संज्ञान लेके आज पहली बात इंडस्ट्रीज के बारे में की, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये वो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह मेवा सनत रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की, उसी तरह लोकल इंडस्ट्रीज भी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हमारा जो यहाँ जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौसम से मुतल्लिक या बाकी जो मामलात हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की बहुत जरूरत है, जिससे वेदर बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम का भी जिक्र किया है, जो ये भाई साहब बात कह रहे हैं। यहाँ मार्केट जो चीफ मिनिस्टर ने अभी वेदर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज है, उसमें काफी एक जो है लाभ हो सकता है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह सजा साहब ने अभी कहा, हमें यहाँ जो स्टोरेज है यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। एक तो प्राइवेट से तो बना रहे हैं, मगर हमें चाहिए कि यहाँ सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट उससे जो हमारे तो आपको लगता है कि वेदर बेस्ड जो सिस्टम अलर्ट है या फिर बाकी चीजें जो हैं टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि हमें यूजुअली पता नहीं होता है कि कब जालाबारी होगी, कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें हो सकती है, कहीं ना कहीं इससे लाभ हो सकता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट तो यहाँ बन रहे हैं मगर गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको वहाँ कम पैसा पड़ेगा वहाँ पर स्टोरेज करने का, जो हमारे मेवा आपको जैस्मीन बताऊं कि हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं यहाँ अनंतनाग के सजाद हकीम। सजाद साहब, ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो ये बजट जो है क्या माने रखता है आम लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये पीपल फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको जा रहे हैं। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। बिल्कुल, और एएवाई परिवार के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है, यानी कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। परिवार को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है एएवाई परिवारों के लिए। अनाथ बच्चों को 4000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में किया है। गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। और सीधे रुक कर लेते हैं लाल चौक का सरोज। न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। सरोज, आम जनता से जुड़ा हुआ पूरा बजट, गरीब तबके का ख्याल रखा है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात है जो इस बजट में छूटी हो?
और सबसे बड़ी बात यह कि सरोज युवाओं को भी टारगेट किया है। युवाओं के लिए 23,000 यानी पढ़े लिखे जो युवा हैं 23,000 जो असामियां हैं, सरकारी नौकरी खाली है, साल भर के अंदर उसको भरने की बात की गई है। सरोज कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी एक तरीके से पुश किया गया है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने सामने रखी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बताते चले, साथ ही साथ आपने एएवाई के हवाले से बात की है, डेली वेजर्स के हवाले से बात किया। ओवरऑल आप देखिए थ्रस्ट जो है इस बार वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे है। 8 ऐसे बड़े क्लस्टर्स आएंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। एक मटन का क्लस्टर है जो श्रीनगर को मिलेगा, वही चेरी का क्लस्टर है गांदरबल को मिलेगा, फिशरीज का क्लस्टर है वो गांदरबल को मिलेगा, वही जम्मू खिते में जैसे बासमती राइस माना जाता है जम्मू खिते में वो क्लस्टर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के हवाले से भी बात करें तो कारखानदार स्कीम जो है उसको इस बार प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो ये आर्टिसंस है इनको कहीं ना कहीं डिपेंड ना रहना पड़े शॉपकीपर्स पे, ये अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। साथ ही साथ इनको कुछ कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसे हम एक क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो इन आर्टिसंस को दिया जाएगा जिस पर ये परचेजिंग कर सकते हैं। अगर इनको थ्रेड खरीदना है शॉल्स के लिए, सुइयां खरीदनी है या चिजल खरीदना है तो उसके लिए इनको एक रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपने एएवाई की बात की है, यहां पर एएवाई को पिछले बजट में ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इस बार उन्होंने फिर से वादा किया है। एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल सही कहा आपने कि 4,000 रुपए तक इनको कोचिंग की फीस दी जाएगी, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोचिंग फ्री रहेगी और वही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री रहेगी। लेकिन अब यह देखना है जब तक कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशियरीज कौन है। एएवाई के जुमरे में कितनी परसेंटेज आती है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की और कितने लोग जो है वो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे जो आज ये पॉलिसीज या स्कीम सामने रखी गई है। और गैस सिलेंडर का भी ऐलान किया है सरोज की एएवाई जो परिवार होंगे, जो खानदान होंगे, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बट विशाल यही देखिए ना, अब जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जो 2026 में अभी होने वाला है तब तक आप किस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे। जैसे खुद एनसी गवर्नमेंट कहती है कि फ्री मीटर्स तभी लग पाएंगे जब तक एक बार पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता, तब जाके पता लग पाएगा कि कितने लोग डिजर्विंग है, कितने लोग एएवाई के जुमरे में आते हैं, बीपीएल के जुमरे में आते हैं या अब पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसलिए इस वक्त इस बजट पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ग्राउंड पे वो देखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स के हवाले से बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए डेली वेजर्स की तो रेगुलराइजेशन की बात बोल दी है। 72,000 रेगुलर डेली वेजर्स है, जैसा अभी जैस्मिन भी कह रही थी, करीबन 29 डिपार्टमेंट से है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन होगी ये एक साथ इन 72,000 डेली वेजर्स की नहीं होगी। इनसे एक मीटिंग बुलवाई गई थी जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से एसोसिएशन मिली थी ईजैक की, जहां पर कहा गया कि हर साल 10 से 12,000, मैं आपको फिर से जिम्मेदारी से बताऊं कि हर साल 10 से 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ना कि इसी साल पूरे 72,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि जो जितने भी हमारे नाक़िदीन हैं यानी जो हमारे लेकिन सबसे अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान। लेकिन सबसे अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि जो जितने भी हमारे नाक़िदीन हैं यानी जो हमारे क्रिटिक्स हैं उनको हम अपने बजट से ही एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, आपने महिलाओं और युवाओं का जिक्र किया तो उसमें मैं बता दूं कि बजट 2026-27 के लिए मिशन युवा जो एक महत्वाकांक्षी योजना है उसके मिशन युवा के बजट को भी बढ़ाया गया है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं वो पूरी तरह से सामने आने बाकी हैं, लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें यहाँ पर क्या रही वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे और क्योंकि यूनियन बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हिमालयन ट्रेल्स है उस पर पैसा खर्चा जाएगा, 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, तो उसी से कहीं जोड़कर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तालमेल खाता है और यहां से बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे।
पोल्ट्री और डेयरी को लेकर डिपेंडेंसी कम करने का जिक्र भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है। पोल्ट्री फार्म्स, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स है, 800 कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर। 5000 बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जो बैकयार्ड होंगे, यानी कि जो पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। कृषि क्षेत्र के लिए 1800 करोड़ का बजट है। 1800 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर के लिए है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात, और सबसे बड़ी बात, डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, आश्वासन दिया है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर भी जो सरकार है वो अब कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर एक खाका तैयार करेगी, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए जरा, किस तरह से इस बजट को डिकोड किया जा रहा है, रिएक्शन किस तरह से अब आ रहे हैं सामने? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे युवाओं को जो है वो ध्यान में रख के जो है काफी अनाउंसमेंट जो है एलोकेशंस तो अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था, मौसम से मुतालिक या बाकी जो मामला हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की बहुत जरूरत है, जरा पूछना कि वेदर बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम का भी जिक्र किया है, जो ये भाई साहब बात कह रहे हैं। यहाँ मार्केट जो चीफ मिनिस्टर ने अभी वेदर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज है, उसमें काफी एक जो है लाभ हो सकता है। उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह सजा साहब ने अभी कहा, हमें यहाँ जो स्टोरेज है यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। एक तो प्राइवेट से तो बना रहे हैं, मगर हमें चाहिए कि यहाँ सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट उससे जो हमारे तो आपको लगता है कि वेदर बेस्ड जो सिस्टम अलर्ट है या फिर बाकी चीजें जो हैं टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि हमें यूजुअली पता नहीं होता है कि कब जालाबारी होगी, कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें हो सकती है। कहीं ना कहीं इससे लाभ हो सकता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट तो यहाँ बन रहे हैं, मगर गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको वहाँ कम पैसा पड़ेगा, वहाँ पर स्टोरेज करने का, जो हमारे मेवा आपको जैस्मीन बताऊं कि हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं यहाँ अनंतनाग के सजाद हकीम। सजाद साहब, ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो ये बजट जो है क्या माने रखता है आम लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये पीपल फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम, तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको जा रहे हैं। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। बिल्कुल, और एएवाई परिवार के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है, यानी कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। परिवार को साल में 3 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है एएवाई परिवारों के लिए। अनाथ बच्चों को 4000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में किया है। गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। और सीधे रुक कर लेते हैं लाल चौक का सरोज। न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। सरोज, आम जनता से जुड़ा हुआ पूरा बजट, गरीब तबके का ख्याल रखा है, MSME सेक्टर को बढ़ावा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात है जो इस बजट में छूटी हो? और सबसे बड़ी बात यह कि सरोज, युवाओं को भी टारगेट किया है। युवाओं के लिए 23,000, यानी पढ़े लिखे जो युवा हैं, 23,000 जो असामियां हैं, सरकारी नौकरी खाली है, साल भर के अंदर उसको भरने की बात की गई है। सरोज, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी एक तरीके से पुश किया गया है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने सामने रखी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बताते चले, साथ ही साथ आपने एएवाई के हवाले से बात की है, डेली वेजर्स के हवाले से बात किया। ओवरऑल आप देखिए थ्रस्ट जो है इस बार वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे है। 8 ऐसे बड़े क्लस्टर्स आएंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को
बूस मिलेगी, एक मटन का क्लस्टर है जो श्रीनगर को मिलेगा, वही चेरी का क्लस्टर है गांदरबल को मिलेगा, फिशरीज का क्लस्टर है वो गांदरबल को मिलेगा, वही जम्मू खिते में जैसे बासमती राइस माना जाता है जम्मू खिते में वो क्लस्टर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के हवाले से भी बात करें तो कारखानदार स्कीम जो है उसको इस बार प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो ये आर्टिसंस है इनको कहीं ना कहीं डिपेंड ना रहना पड़े शॉपकीपर्स पे, ये अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। साथ ही साथ इनको कुछ कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसे हम एक क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो इन आर्टिसंस को दिया जाएगा जिस पर ये परचेजिंग कर सकते हैं। अगर इनको थ्रेड खरीदना है शॉल्स के लिए, सुइयां खरीदनी है या चिजल खरीदना है तो उसके लिए इनको एक रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपने एएवाई की बात की है, यहां पर एएवाई को पिछले बजट में ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इस बार उन्होंने फिर से वादा किया है। एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल सही कहा आपने कि 4000 रुपए तक इनको कोचिंग की फीस दी जाएगी, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोचिंग फ्री रहेगी और वही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री रहेगी। लेकिन अब यह देखना है जब तक कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशरीज कौन है। एएवाई के जुमरे में कितनी परसेंटेज आती है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की और कितने लोग जो है वो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे जो आज ये पॉलिसीज या स्कीम सामने रखी गई है। और गैस सिलेंडर का भी ऐलान किया है सरोज की एएवाई जो परिवार होंगे, जो खानदान होंगे, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बट विशाल यही देखिए ना, अब जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जो 2026 में अभी होने वाला है तब तक आप किस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे। जैसे खुद एनसी गवर्नमेंट कहती है कि फ्री मीटर्स तभी लग पाएंगे जब तक एक बार पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता, तब जाके पता लग पाएगा कि कितने लोग डिजर्विंग है, कितने लोग एएवाई के जुमरे में आते हैं, बीपीएल के जुमरे में आते हैं या अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसलिए इस वक्त इस बजट पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ग्राउंड पे वो देखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स के हवाले से बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए डेली वेजर्स की तो रेगुलराइजेशन की बात बोल दी है, 72,000 रेगुलर डेली वेजर्स है, जैसा अभी जैस्मिन भी कह रही थी, करीबन 29 डिपार्टमेंट से है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन होगी ये एक साथ इन 72,000 डेली वेजर्स की नहीं होगी। इनसे एक मीटिंग बुलवाई गई थी जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से एसोसिएशन मिली थी ईजैक की, जहां पर कहा गया कि हर साल 10 से 12,000, मैं आपको फिर से जिम्मेदारी से बताऊं कि हर साल 10 से 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ना कि इसी साल पूरे 72,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सरोज, यानी आपने दो बातें, डेली वेजर्स का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर में क्योंकि इसको लेकर एजिटेशन भी बहुत ज्यादा हुई है पास्ट में, और इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, रेगुलराइजेशन उनकी कैसे होगी, ये सरकार तय करेगी, तैयार करेगी इसका खाका, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। दूसरी बात आपने कही कास्ट सेंसस की, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला इशू है और इसी के अंडर ये जो सारी घोषणाएं की हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन आएगी। जब तक कास्ट सेंसस पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक एएवाई का क्राइटेरिया क्या होगा, किन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये इंप्लीमेंटेशन को लेकर एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ओवरऑल इस बजट को देखा जाए तो रादर देन फाइंडिंग लूप होल्स, हम इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें देख पा रहे हैं। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया था कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसी की एक तरह से एक्सटेंशन के तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर है जम्मू कश्मीर। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, लेकिन एज कंपेयर टू दोज स्टेट, विशाल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर जम्मू कश्मीर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, सीजनल इंश्योरेंस का मैं जिक्र कर रही थी फार्मर्स के लिए, ये वो तमाम इस तरह की घोषणाएं हैं, पोल्ट्री फार्म्स का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़ी हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, यही 3-4 इंडस्ट्रीज है जो बैकबोन रहती है यहाँ पर। नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बात हुई है, देखिए लेवेंडर ऑयल जम्मू रीजन में होता है, माफ कीजिएगा लेवेंडर जो होती है उसकी खेती जम्मू रीजन में होती है, उसकी एक्सट्रैक्शन जो होगी ऑयल्स की, फिर उनमें एसेंशियल ऑयल्स बनेंगे, उसके हवाले से भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के सामने लाई गई है। अब ये देखना होगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। देखिए 200 नई ई बसेस भी यहाँ पर आएंगे, हालांकि इस
वक्त यहाँ पर ई बसेस चल रही है, 200 और नई ई बसेस आएंगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट बसेस है जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करते हैं, उसमें भी ख्वातीन जो है उनके लिए इस बार उनको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए, यानी कि वो मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी कई सारी स्कीम्स है जो लोगों की बहबूदी के लिए है, बट अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है इनका कैसा सपोर्ट रहेगा इन ये जो आज ये बजट सामने आया हुआ है। इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे पूछें क्योंकि वो कॉमर्स सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के यूथ को ही उसमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं। जहूर जी, देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 23,000 नौकरियों की बात कही जा रही है और उसके साथ डेलीवेजर्स की बात कही जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की, चाहे हमारे साथ फहमीदा अख्तर हैं, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे साथ बशीर अहमद हैं और ये MSME के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, या चेयरमैन है फेडरेशन, यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन। सजाद साहब, ये बताइए कि क्या लाभ हो सकता है जो 23,000 नौकरियां चूंकि अब आने वाले वक्त में, और उसके साथ साथ जो डेलीवेजर्स के परमानेंट का मसला है, तो क्या कहीं ना कहीं इससे एक खला पूर हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी साबित हो सकती है। अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हो सकता है कि आइंदा वाले आज अगर 23,000 इस बजट में अगर 23,000 नौकरियों क्या रखा है, हो सकता है कि इंशाल्लाह रहमान आइंदा हम ये 50,000 होगा या 1 लाख के करीब होगा। कम से कम इनिशिएटिव तो लेना है सबसे। उसके बाद में जो उन्होंने आज जो बोला है कि जो डेलीवेजर्स है उनके लिए भी जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो भी एक खुशाइंद आईवाई के तहत जुमरे में आने वाले 3 सिलेंडर्स की बात कही गई है और भी कुछ जो है ऐलानात मुतवक्का है। देखिए, मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। ये हमको ये जो हमारे AAY जो हमारे है वो हमारे BPL से भी निचले करके है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। अगर मिडिल क्लास के लिए हमने एक सिलेंडर रखा है, उनके लिए भी 2 सिलेंडर रखने हैं, वो हमारी गुजारिश रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो यहाँ पे मेन है वो ये है कि हमारे पास अभी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। ये बहुत ही मेन मकसद है। एजुकेशन पॉलिसी में आप देख लीजिए कितने हमारे बेरोजगार है जो पढ़े लिखे हैं, डबल PhD करके है, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में पिछले 5 साल से 8 साल से। अभी वो ओवरेज होने की आने की मतलब वहां पे जी उनके लिए कुछ ना कुछ को सोचना है। अगर कोई बंदा, अगर कोई हमारा यूथ है वो 5 साल से 8 साल से। जैस्मिन, अगर आप ओवरऑल बात करें इस बजट की तो कहीं ना कहीं पीपल फ्रेंडली बजट है, लेकिन कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सजाद साहब अभी बोल रहे थे या बशीर साहब भी या फहमीदा जी भी बोल रही थी कि कुछ और चीजें भी होनी चाहिए इस बजट में, ताकि जरूर एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो ये अरमान हमेशा कम ही रह जाएंगे। फिलहाल मैं रुख करूंगा याकूब ढुन्नो का, जो हाउस बोट ओनर हैं। याकूब साहब, बजट में सब कुछ तो नहीं मिल सकता, लेकिन कितना मिला, कितने मुत्तफिक है आप आज के बजट से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को दावत दी आज के इस बजट में दोबारा। लास्ट ईयर भी हम इसी प्रोग्राम में थे और आज भी जिंदा हूं तो तभी आपके इस स्टेडियम में हाजिर हूं जनाब। आपने मेरे मुंह से एक ये जो गालिब साहब का शेर है, कब से मैंने इसकी प्रैक्टिस करके रखी थी कि मैं आपके स्टेडियम में मैं पूरे हिंदुस्तान को ये सुना दूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा क्योंकि आज जो है ना 1947 से लेके अभी तक जो हमारे सीनों में वजन रखा हुआ है, जो हमारे सीनों में अरमान रखे हुए हैं, वो मैं आज न्यूज़ 18 के इस स्टेडियम में पूरा निकालना चाहता हूं, पूरी बदास निकालना चाहता हूं जनाब, अगर आपका मुझे इजाजत हो तो याकूब साहब बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपके अशार तो मैंने सुन लिए जो आपने गालिब को कोट किया है, और अच्छा हुआ मैंने शायर का नाम नहीं बता दिया, आपने नाम बता दिया। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर कितना रिच है कल्चरली और लिटरली, अदब में भी कितना रिच है, तहजीब में भी कितना रिच है। अब बाकी चीजें तो है ही, खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती, सब कुछ मालामाल है जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए होते हैं, बजट चाहिए होता है। जी। तो मैं ये चाहूंगा कि हाउस बोट ओनर की हैसियत से आप ये बताएं कि क्या उम्मीदें हाउस बोट वालों ने लगा रखी थी और इस बजट के ऐलान से किस हद तक उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं?
बिल्कुल जनाब, देखिए पहले तो मरकजी बजट निकला तो वो तो टोटल फेलियर हुआ। हमारे जो इश्यूज थे वहां पे उस बजट में हमारे जो भी ग्रीवेंस थे, जो भी हमारे मुतालबात थे, जो भी हमारे जो बेसिक हमारे डिमांड्स थे, वहां पे वो पॉलिसी या वैसा कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। दूसरा ऐलान जो आज हुआ है जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली में, तो जो ये बजट है इसने तो हमें पूरा ही नाउम्मीद कर दिया, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 मुतालबात थे जो हम कई दहाइयों से इसको रिपीट लगा के रखे हुए हैं। जनाब, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो हमें वादा किया गया था कि हम सब्सिडाइज रेट्स पे हाउस बोट को टिम्बर इशू करेंगे, सर्कुलर से निकले लेकिन आज तक टिम्बर हासिल नहीं हुआ किसी भी एक हाउस बोट वाले को। दूसरा जो कोविड-19, उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, फिर पहलगाम का सिनेरियो, इन सालों में जो हमें बिजली की जो बिल्स है वो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, तो वो वेव ऑफ यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तीसरा जो हमारा जो बेसिक मुतालबा है वो है रिपीटेशन स्कीम ऑफ हाउस बोट ऑनर्स। जो हमारे हाउस बोट मालिकान है जो कुछ करना चाहते हैं इस धंधे को, उनको रिहैबिलिटेशन स्कीम वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। सॉफ्ट लोन पैकेज, 9 महीने हम बैठे रहे हैं सर, ये हम जानते हैं कि हम कैसे इस दुनिया में इस वक्त जीवित है। 9 महीने जी ठीक है, यानी वो नहीं मिला। और दूसरी बात, लास्ट वाला रिवाइवल पॉलिसी फॉर हाउस बोट इंडस्ट्री, उमर साहब ने कहा कि हम इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। क्या वो असेंबली में, JKUT असेंबली में ये ऐलान करेंगे कि हाउस बोट इंडस्ट्री है, ये जो हाउस बोट कम्युनिटी है ये एक इंडस्ट्री है, ताकि हम नेक्स्ट बजट में इंसेंटिव्स और पॉलिसीज के हकदार हो। जनाब बिल्कुल ठीक है सरोज, क्योंकि याकूब साहब की इतनी सारी ग्रीवेंसेस हैं, इतने सारी इनकी शिकायतें हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस बीच हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सरोज इफ यू कैन टेल मी, मुख्यमंत्री ने जैसे आप कह रहे थे ना कि इम्प्लीमेंटेशन इन तमाम जो घोषणाएं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि मैं एक चीज यहां पर रिलेट कर पा रही हूं, याकूब साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि वी आर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और जिन 9 महीनों में खाली बैठने का जिक्र याकूब साहब कर रहे हैं वो डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनेट है उनकी बात से, और उनमें अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनती है तो क्या टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर से तो टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और स्पेशली अब आप देखिए कि कहा जा रहा है, आज ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो ट्राइबल एरियाज यानी फार फ्लंग एरियाज हैं, आप पूंछ रजौरी की बात कर लीजिए, कश्मीर में आप बात कर लीजिए केरन जैसी जगह की, या यहां से आप गुरेज जैसी जगह देख लीजिए, तो जिस तरह से आपने देखा भी होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी जिक्र किया था, जो माउंटेन ट्रेल्स है इनको डेवलप करना है, उसी के हवाले से आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी, हालांकि उन्होंने माउंटेन ट्रेल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का, और उसको वहां पे डेवलप किया जा सकता है। और ये ट्राइबल के जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम रहते हैं वो भी बड़े कमाल रहते हैं, जैस्मिन अपने देखने वालों को भी कहे, एकदम मुख्तलिफ होते हैं वो। जम्मू और कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है हैंडलूम होता है, तो उस पर भी एक थ्रस्ट दिया गया है कि ट्राइबल एरियाज जो है या ट्राइबल जो इनके ओल्ड कमोडिटीज रही है उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए, उनको किस तरह से पुश किया जाए। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाइसन आतंक के हमले के बाद किस तरह से एक बहुत बड़ा धचका लगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। वही अगर हम हाउस बोट एसोसिएशन ओनर्स की भी बात कर लीजिए, देखिए शायद याकूब दोनों ने आपको ये कहा या नहीं कहा, वो मांग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आया है कि और नए हाउस बोट सब बनने चाहिए यहां पर। कुल मिलाकर करीबन 940 हाउस बोट से अगर हम निगीन, जहलम और डल लेक की बात करें तो अभी हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहे हैं नए हाउस बोट बनाने के लिए, और ये बड़ी देरी ना मांग है। अगर आज इनको रेनोवेशन भी करनी है, एक कील भी लगाना है, तो LCA में इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस वक्त इसी बात से लड़ रहे हैं कि अब जबकि वापस से टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ रहा है तो कम से कम हमें परमिशन दी जाए। हाउस बोट एसोसिएशन के इसी तरह की चीजों की बात कर रहे थे, और अभी भी इस बजट में भी हम उनके इस सेम मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज ये एक चीज है। आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल बशीर साहब BJP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, हाउस बोट बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं बजट में, नो डाउट, लेकिन हाउस बोट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग तो बहुत निराश है। याकूब दोनों को आपने सुना होता तो शायद आप भी थोड़ा सा हो जाते परेशान।
शुक्रिया जास्मीन जी, शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि एक बड़ा होलिस्टिक बजट है जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स को टच किया गया है। और अगर ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे कि जो पिछले 2-3 साल का जितने भी हमारे स्टैट्स थे उसमें बहुत खासी इंप्रूवमेंट आई है, चाहे वो हमारा रेवेन्यू का सेक्टर हो, हमारा हेल्थ सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, हमारा फॉरेस्ट सेक्टर हो, पीएचई और स्पोर्ट्स के हवाले से भी यहाँ बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये दूसरा बजट जो है वो गवर्नमंट ने पेश किया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो कुछ ग्रीवेंसेस हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की, तो उनको भी जरूर एड्रेस किया जाएगा। मगर मैं मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर के आवाम को कि एक 10-11 साल के एक स्टैग्नेशन के बाद एक जो रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर है वो और ऊंचाई के शिखर पर चढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। बिल्कुल। और साहिल बशीर साहब, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? असली प्रतिक्रिया तो आपकी तरफ से आती है। मुझे लगता है साहिल बशीर मुबारकबाद देंगे, शायद जैसा आकाश शर्मा कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है और बहुत इसमें डायनामिज्म है और महिलाओं को पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, गरीबों पर फोकस है। तो आकाश शर्मा अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि साहिल बशीर को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। क्यों साहिल? मुबारकबाद तो जुमलेबाजी के लिए और एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी देनी है। ये हम पिछले मुबारकबाद तो आपने दे ही दी। बिल्कुल बिल्कुल। मुबारकबाद इस बात की भी देनी है कि पावर मीटर भी लग गए जो पिछले बजट में इन्होंने कहा था, और किनको लगे हैं और खालाजी के घर में लगे हैं तो बाकी लोगों के घर में भी लगेंगे, वो भी हमने देख ही लिया। पिछले बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स बने थे, वो ग्राउंड पे कहां पे इंप्लीमेंट हुए और उसका आउटकम क्या है वो भी हमको आज देखने को मिला है। आज तो दूसरा बजट है। तीसरा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको आप तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाएंगे। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या बन रहा है उसको भी आप तोड़ मरोड़ के आगे पेश करेंगे, तो मुबारकबाद तो इस बात की देनी पड़ेगी। विशाल जी, एक बेहतरीन जम्मू कश्मीर को सबसे पहली चीज जो यहां का यूथ है, जो यहां के लोग हैं, जो यहां की महिलाएं हैं, उनके साथ जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे और 1 साल से ऊपर आपकी सरकार हुई, पिछले साल के बजट में जो आपने प्रोमिसेस और जो सपने लोगों को दिखाए उनको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने में आप नाकाम रहे। आज आपने अपनी साख बचाने के लिए एक और डॉक्यूमेंट पेश किया। इनको सिर्फ आप दोबारा लाइनों पे रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट में रखेंगे, और जब उनको इंप्लीमेंट करने की बात आएगी आपका सिर्फ वही बहाना होगा, स्टेटहुड, यू टीम, मेरे पास पावर नहीं है, एलजी के पास पावर है, फाइल चली गई है, दस्तखत नहीं हो रहा है। अगले साल, अगले डिबेट में, अगले बजट पर इसी तरह हम क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ इस्तेसाल करते आई है और आज भी इस बजट के थ्रू वो लोगों के साथ इस्तेसाल ही करेगी, क्योंकि उनका कोई रोड मैप आगे नहीं है। आप इस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मुबारकबाद दी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को मुबारकबाद दी है बीजेपी के प्रवक्ता साहिल बशीर ने, आप इसे एंडोर्स करते हैं? देखिए विशाल साहब, जुमलेबाजी की अगर बात भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। ये वेग नैरेटिव अगर क्रिएट करना हो तो कोई इनसे सीखे। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ और नंबर्स के साथ आपको बता सकता हूं कि पिछले 1 साल 2 महीने की सरकार ने क्या अचीव किया है। देखिए, जो हमारा पिछला 1 साल का दौर रहा, पिछला 1 साल का जो दौर रहा उसमें जी बिल्कुल ज्यादा हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और फ्लैश फ्लड्स देखे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो वक्त हमें मिला सरकार में काम करने का, उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक मॉडल निकल कर आया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो 2023-24 में 2,36,000 करोड़ से बढ़कर 2,62,000 करोड़ हुआ, वो यूं तो नहीं हुआ। और जो हमारी प्रोजेक्शन है 2027 की, वो है लगभग 2,88,000 करोड़ की। तो ये कहीं ना कहीं एक तरक्की का पैरामीटर जो है। हमारी जो इकोनॉमी है, मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 4-5 साल थे 4.47% पे रुकी हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी ग्रोन बाय
5.8%। तो मुझे लगता है कि ये भी एक पैरामीटर है और सरकार इसके ऊपर पूरा काम कर रही है। जहां रिक्रूटमेंट का सवाल है या एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में 7650 पोस्ट जो है वो फुलफिल की गई हैं और 23,000 एडिशनल जो पोस्ट हैं जिसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड है उसकी भी प्रोजेक्शन की गई है जो 2026-27 में जो हम अकम्प्लिश करने वाले हैं। उसी तरीके से अगर मैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर की बात करूं तो जो हमारी लैंड है, जो पिछला जो 12.71 लाख हेक्टेयर जो लैंड थी उसको कन्वर्ट किया गया 13.51 लाख हेक्टेयर्स में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा जो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, यानी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर, उसको रिवाइव करने का काम किया गया। वैसे ही टूरिज्म में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले जो पहलगाम अटैक की वजह से जो हमारे होटल इंडस्ट्री थी वो एक तरह से सफर कर रही थी, तो मुझे लगता है कि सीएम साहब ने वो भी एक बात की है कि वो होम मिनिस्ट्री से जल्द उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी क्लोज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसको भी खोला जाएगा। जहां तक होम स्टेज का सवाल है कि जो हमारे ऑलरेडी फंक्शनल होटल्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं जहां पर पोटेंशियल है टूरिज्म का, वहां पर भी होम स्टेज को जो है वो रिवाइव करने का काम किया जाएगा। और एक मैं आपको एक मुबारकबाद की बात और बता दूं कि जम्मू कश्मीर हैज, मुझे तो आप बता दीजिए, साहिल बशीर साहब को ये बता दीजिए, वो भी सुन रहे हैं आपको। नहीं, ये तो सुनेंगे, ये सुनेंगे, लेकिन इनको उस बात को तस्लीम करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमसे मैच नहीं करती। और जहां तक इनका सवाल है, जहां तक आकाश वर्मा जी, मैं सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूं। आपने जो लाइन लिखी हुई है, जो आप लाइन इस वक्त डिबेट में पढ़ रहे हैं, उससे यहाँ के युवा का रोजगार नहीं बढ़ेगा, उससे यहाँ की महिलाओं को सहूलियात नहीं मिलेगी। ये आपके ही मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि जो उन्होंने फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए, एक छोटा सा वो एक चीज था, छोटी सी एक चीज थी। आकाश वर्मा साहब सुन लीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, वापस जवाब सुन लीजिए। आपकी के मंत्री का ये स्टेटमेंट है कि हम उसका खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके मंत्री का स्टेटमेंट है। स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे। जो अभी स्पोर्ट्स की आपने बात की, उसमें कितनी पार्शियलिटी की, कितने बायस रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी आपके मंत्री ने खुल के बता दिया। अब मुझे बताइए, जो चीजें इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड होती हैं, आप मुझे 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ जीडीपी अब हुई है, 11% डाउन हुई है, उससे यहां के युवाओं को रोजगार मिला नहीं मिला, यहां की महिलाओं को सहूलियात मिली नहीं मिली। जो 12 गैस सिलेंडर्स आपको इसी बजट से देने थे, लास्ट ईयर के बजट में से दी आपने नहीं दी। इंडस्ट्रीज की जो पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करा आपने नहीं करा। कितना बजट आया था और कितना उसमें से लैप्स किया, कितना फंड वापस गया, उसमें से कितना खर्च कर पाई आपकी गवर्नमेंट, उसके नंबर भी आपके पास होने चाहिए। आज दोबारा से बजट पेश हो रहा है, मैं बोल रहा हूं जो पिछले साल का बजट था उसमें आप फेलियर रहे, आपकी गवर्नमेंट फेलियर रही, और सिर्फ आपके बयान इस चीज पे आए हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास स्टेट होनी चाहिए, यूटी में हम नहीं कर पाते हैं। आज दोबारा से मैं आपको वाजिया तौर बता रहा हूं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है, जो भी स्टेटमेंट आपने बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाना है, लोगों को किस तरह गुमराह करना है, अगले साल इस टाइम इसी बजट लेवल पे हम दोबारा डिस्कशन करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से फेलियर रही है। और आपकी जुमलेबाजी, और आपको यहां से सोल्यूशन मांगेंगे, लेकिन आप सोल्यूशन के बदले दोबारा प्रॉब्लम गिनवाएंगे। आपको यहां से सवाल पूछेंगे लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, उस सवाल के बदले आप दोबारा सवाल पूछेंगे। यही तो करते आए आज तक। साहिल बशीर जी, एक मिनट, आकाश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन याकूब साहब इस वक्त कुछ कहना चाह रहे। जी देखिए, शुक्रिया दोबारा टाइम देने के लिए। यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव है, 2 बड़ी सियासी तंजीमों के, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, इनको मुखातिब करके कहना चाहता हूँ। एक तो ये कह रहे थे हमारे एनसी के जो रिप्रेजेंटेटिव, मुबारकबाद है उनको कि इतना बड़ा खासा बजट इन्होंने आज ऐलान किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ मुबारक इस बात का इनको कि 12 सिलेंडर से घट के 6 सिलेंडर हो गए साल के, इस बात का इनको मुबारकबाद। दूसरा, जो यहाँ पे बीजेपी के हमारे सियासी रिप्रेजेंटेटिव है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जब हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मरकजी बजट आया तो उस हमारी जो हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, इन्होंने हाउस वोट
जिसको बैकबोन कश्मीर हेरिटेज का कहा जाता है, या जम्मू कश्मीर को ताज हिंदुस्तान का माना जाता है, उस ताज के जो नगीने हैं वो हाउस बोट कहलाता है। इसके बारे में क्या सोचा इन्होंने? क्या इन्होंने पॉलिसी लाई? क्या इंसेंटिव्स हमको दिए? क्या इन्होंने रिलीफ हमको दिया? अरे जनाब, हम पिछले कई दहाइयों से कह रहे हैं कि हमारे हाउस बोट डूब रहे हैं, हमारे हाउस बोट जल के खाकिस्तान हो गए हैं। उनको आपने परमिशन नहीं दिलाई दी अभी तक। उनके लिए हमें सब्सिडाइज रेट्स पे आपने हमें लकड़ी नहीं फराहम की। हमें जो बिजली 2019 कोविड में और 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद जो बिल्स आई है इलेक्ट्रिसिटी की, मामूली बात है, तो वो भी आप नहीं कर पाए आप। जो हमारा रिवॉल्वर पॉलिसी है, 9 महीने हम बैठे हैं, हमारे जो पीछे हमारी फैमिली बैठी है, हमारा हाउस बोट लाइवलीहुड है, हैंड टू माउथ। हमारे बारे में मरकजी हुकूमत ने क्या सोचा, जिनका नारा। ठीक है, आकाश जी से जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, ये तो वाजिब सवाल है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है याकूब जी के साथ इसी वक्त में जुड़ी हुई थी और इसी तरह बजट पेश हुआ था, और उस वक्त भी ये सेम ग्रीवेंसेस थे, सेम बातें थी कि हमें एक कील तक ठोकने नहीं दी जाती, उनके रेस्टोरेशन को लेकर दिक्कत होती है, टिम्बर सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलता। ये मांग तो साल दर साल चली आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लास्ट ईयर का मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम हैविंग अ डेजा वू। देखिए जास्मीन जी, मैं आपको बताऊं कि आप कितना भी काम करें लेकिन ग्रीवेंसेस कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और मैं याकूब मलिक जी की बात से बिल्कुल मुतमईन हूं, और मैं कोई इससे पीछे नहीं हट रहा कि इनके ग्रीवेंसेस में कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और इनके जो नतायज हैं वो जल्दी इनको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पिछले 10 साल का जो बैकलॉग इस सरकार को मिला लेगेसी में, उसको हम कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बड़ी कामयाबी। लेकिन आकाश जी, उस 10 साल के बैकलॉग का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ केंद्र सरकार की इतनी सारी सिंपैथी, सहानुभूति और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इतना ज्यादा सपोर्ट आपको मिला। हिमाचल प्रदेश मेरा गृह राज्य है, वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर को एडिशनल पैसा दिया गया है, लास्ट ईयर भी दिया गया, और इस बार भी यूनियन बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा एलोकेशंस हैं। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी सेंसिटिव है और कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये हर कोई जानता है। सुनिए, मैं आपको वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा आपने बात की कि जो जम्मू कश्मीर को पैसा ग्रांट हुआ, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि नेशन वाइड में पोस्ट कोविड एक सास्की करके एक स्कीम थी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें सभी स्टेट्स को 3000 करोड़ रुपए के लगभग जो बजट था वो 50 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए एक लोन के तौर पर दिया गया, लेकिन जिसमें जम्मू कश्मीर जो था वो एनरोल नहीं था। लेकिन मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, कि जब वो मरकज में की मीटिंग्स में बैठे, उन्होंने जब सास्की का सुना तो उन्होंने एक जद्दोजहद की कि इस स्कीम को जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि सास्की को जम्मू कश्मीर में लाया गया, और ये जो एफर्ट्स थे वो ऑनरेबल सीएम साहब के थे, और हमारे साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली को और पौंडीचेरी को भी इसका फायदा हुआ है। और उस सास्की स्कीम के अंडर मैं आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज फंक्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, हमारी जो फ्रूट ग्रोइंग कैपेसिटी है, हमारा जो पोल्ट्री है, फिश प्रोडक्शन है और मिल्क प्रोडक्शन है, वो एक बिल्कुल। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बजट पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि निराशाजनक है उमर सरकार का बजट। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा कहते हैं बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा, और बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनील शर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिएक्शन है। तो अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जास्मीन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि जो जितने भी हमारे नाक़िदीन हैं, यानी जो हमारे क्रिटिक्स हैं, उनको हम अपनी बजट से ही एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल। आपने महिलाओं और युवाओं का जिक्र किया, तो उसमें मैं बता दूं कि बजट 2026-27 के लिए मिशन युवा, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके मिशन युवा के बजट को भी बढ़ाया गया है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो पूरी तरह से सामने आने बाकी हैं, लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें यहाँ पर क्या रही वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, और क्योंकि यूनियन बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हिमालयन ट्रेल्स है
उस पर पैसा खर्चा जाएगा, 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, तो उसी से कहीं जोड़कर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तालमेल खाता है और यहां से बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। पोल्ट्री और डेयरी को लेकर डिपेंडेंसी कम करने का जिक्र भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है। पोल्ट्री फार्म्स, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स है, 800 कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर। 5,000 बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जो बैकयार्ड होंगे, यानी कि जो पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। कृषि क्षेत्र के लिए 1800 करोड़ का बजट है। 1800 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर के लिए है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात, और सबसे बड़ी बात, डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, आश्वासन दिया है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर भी जो सरकार है वो अब कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर एक खाका तैयार करेगी, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए जरा, किस तरह से इस बजट को डिकोड किया जा रहा है, रिएक्शन किस तरह से अब आ रहे हैं सामने? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे युवाओं को जो है वो ध्यान में रख के जो है काफ़ी अनाउंसमेंट जो है एलोकेशंस की बात कही गई है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी एलोकेशंस की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये एक खास कदम हो सकता है। मेरे साथ एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी जो है वो मौजूद हैं। आप इस तरह जो घोषणाएं आज हुई हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है, ट्रेड को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, आप कितना मुतमईन इससे? देखिए, जिस प्रकार से आज का जो बजट हमने देखा है, ध्यान में आया कि जिस प्रकार से आज घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की है, इसके अंदर हम देखें तो युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। कौशल विकास के विषयों को लेकर और महिलाओं को लेकर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की कि 257 लाख उसके लिए भी 57 उसके लिए भी इसके अंदर दिए गए हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से उसके अंदर बात की गई है कि हम कौशल विकास को लेकर हम काम करने का काम करेंगे, हम नई नौकरियां, जो खाली रिक्त पद हैं उनको भरने का लेकर हम प्रयास करेंगे। इन सब विषयों को लेकर जो बजट के अंदर ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। और ये तो बजट के अंदर बातें आज रख दी गई हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट कितना रहेगा वो एक बहुत देखने वाला विषय हमारे लिए भी रहेगा। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी सरकार अपना प्रयासरत है, और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। क्योंकि पिछले साल जो पहला बजट जो पेश किया था चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने, क्या आपने उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो पार्ट पे भी ध्यान देना होगा? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से हम पिछली बार वर्ष भी हमने देखा कि एनएलयू के लिए 50 करोड़ इसके अंदर सैंक्शन किए गए थे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो उसके अंदर 1 रुपया भी उसका आज तक भी खर्च नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि जिसको बजट के अंदर रखा जाता है उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट उसको ग्राउंड लेवल पर करना है, उस विषय को लेकर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे, जो आम जनमानस है जम्मू का, वो किस तरह से देखता है जो वादे किए गए हैं, बिजली की समस्या को दूर करने की, बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, स्मार्ट मीटर्स ताकि बिजली की जो ज्यादा खपत होती है उसको कम किया जाए, उसके साथ साथ बिजली पानी जो है जो जल पहुंचाने की बात की गई है, आप कितना मुतमईन इससे? देखिए, सरकार की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए, हमारा मुल्क जो है वो 77वां मतलब 75 से ऊपर आज़ादी के साल मना चुका है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बस यही समस्या लेकर बैठे हुए हैं। एक भी समस्या जो है वो पूरी तरह हल नहीं हो सकी, और नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन के जो है वो उभर रहा है, जिससे हमारी पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी जो है वो बेचारी पूरी तरह से परेशान है कि वो क्या करे क्या ना करे। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिसमें हमारे नौजवान लोगों ने एक साइड पे होके गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़ के अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया था। जैसे हमारा दूरदर्शन था, दूरदर्शन में बहुत सारे कलाकारों ने अपनी रोजगार छोड़ के, अपनी गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ के उस शोबे को अपनाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी यहां से चलेगी। लेकिन सरकार ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें की, कभी हमें बोला डुग्गर चैनल बन गया, कभी बोला रुक गया। मतलब अभी तक जो सारे कलाकार हैं, नौजवान पीढ़ी जो आने वाली है, वो सारी की सारी परेशान बैठी हुई है।
देखिए कोई बड़ा मिनिस्टर आता है तो आके बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें कर जाता है, हम ये लेकिन आप चाहते हैं कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो भी होना चाहिए, रोजगार के लिए कदम उठाना चाहिए। एक युवाओं को जिस तरह से स्टार्टअप्स को लेकर भी जो है वो बातें की गई हैं, जो अपना रोजगार जो है वो चलाता है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उस तरह की कोशिशें भी करने की बात की गई है। देखिए इसके अंदर इस प्रकार से बिल्कुल राजन, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर डेली वेजर्स को लेकर सामने आ रही है। डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन हमने साल भर देखा और अब डेली वेजर्स को नियमित करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। और ये बहुत बड़ा ऐलान है जैस्मिन, जिस डेली वेजर्स को लेकर के लगातार सरकार जो है सवालों के घेरे में थी, और उन डेली वेजर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान, साथ ही युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान है। वो युवा जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी के इंतजार में हैं, 23,000 जो भर्तियां हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और ये 23,000 भर्तियां जो हैं वो साल भर के अंदर पूरी की जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है युवाओं के लिए। बिल्कुल। और इस बीच डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि किस तरह 2025 से 26 के बीच डेली वेजर्स ने जमकर प्रदर्शन किए। 1 लाख के आसपास डेली वेजर्स की संख्या है जो जम्मू कश्मीर में 27 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं। और ऐसे में डेली वेजर्स को लेकर जो रेगुलराइजेशन की बात यहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही है, ये 2 दशकों के बाद ऐसा होगा कि अगर वाकई इस फैसले पर मोहर लग जाती है तो 2 दशकों से विशाल डेली वेजर्स जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुछ डेली वेजर्स उनके साथ संभवतः मौजूद हैं। जहूर, डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान। यास्मीन, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री की तरफ से। जो अभी बजट पेश हुआ ऐवान में, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नॉर्म्स को अप्लाई करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद जो है रेगुलराइजेशन का अमल शुरू किया जाएगा। हमारे साथ चूंकि बात करने के लिए मौजूद हैं जो फहमीदा अख्तर हैं और एक एक्टिविस्ट रही है पहले से ही, और इन्हें बड़ी मेहनत की है पहले से ही कि किस तरह से जो आंगनबाड़ी है, हेल्पर्स, और इनने हमेशा से बात की है। फहमीदा जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने अभी बजट ऐवान में पेश किया, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे? या आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम में इजाफा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमें पहले ही पता था कि वो कुछ ना कुछ हम डेली वेजर्स के लिए और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के लिए वो कुछ ना कुछ करने वाला है। इसलिए हमने जो श्रीनगर में हमने जो उसको जो रोज दिखाया है कि हम 30 साल 40 साल से सड़कों पे रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, क्योंकि हम गरीब तबके से हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स। इसलिए हमें भरोसा है अपनी हुकूमत पे, अपने चीफ मिनिस्टर साहब पे, और जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर मैडम है, तो हमें विश्वास था कि इस बजट में कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा। हमारे साथ एमएसएमई के प्रेसिडेंट भी हैं बशीर साहब, ये बताइए कि ये जो सामने आई है एक बात बहुत बड़ा खुलासा कि चीफ मिनिस्टर ने जो ऐवान में कहा कि जो डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट करने का अमल शुरू किया जाएगा कंसल्टेशन के बाद, और इसमें जो भी लवाजमात है उनको पूरे करने के बाद डेली वेजर्स का अमल पूरा किया जाएगा। ये तो एक खुशायन बात है, क्योंकि इन्होंने जो हमारी सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम डेलीवेजर्स की जो मसाइल है उनको हल करने की, ये उसकी तरफ एक कदम है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो भी वादा इस सरकार ने किया है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह जरूरी। खासकर मैं इंडस्ट्रीज की तरफ जाऊंगा। जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो तो रोजगार मुहैया करती है जी, गवर्नमेंट को इससे बहुत फायदा होगा। अगर जो तो चीफ मिनिस्टर ने सिख इंडस्ट्रीज को भी रिजुनेट करने की बात की और एमएसएमई को भी जो है ना उसमें डेवलपमेंट की बात की। इसमें पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी चलाई थी, यहाँ से हम यहाँ जो हमारे इंडस्ट्री स्टेट्स है या बाकी जो आउटसाइडर यूनिट होल्डर्स है उनसे बात की। उन्होंने वो उसका पूरा संज्ञान लेके आज पहली बात इंडस्ट्रीज के बारे में की, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये वो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह मेवा सनत रीढ़ की हड्डी है,
कश्मीर की, उसी तरह लोकल इंडस्ट्रीज भी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हमारा जो यहाँ जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौसम से मुतल्लिक या बाकी जो मामला हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की बहुत जरूरत है, जिससे वेदर बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम का भी जिक्र किया है, जो ये भाई साहब बात कह रहे हैं। यहाँ मार्केट जो चीफ मिनिस्टर ने अभी वेदर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज है, उसमें काफी एक जो है लाभ हो सकता है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह सजा साहब ने अभी कहा, हमें यहाँ जो स्टोरेज है यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। एक तो प्राइवेट से तो बना रहे हैं, मगर हमें चाहिए कि यहाँ सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट उससे जो हमारे तो आपको लगता है कि वेदर बेस्ड जो सिस्टम अलर्ट है या फिर बाकी चीजें जो हैं टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि हमें यूजुअली पता नहीं होता है कि कब जालाबारी होगी, कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें हो सकती है, कहीं ना कहीं इससे लाभ हो सकता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट तो यहाँ बन रहे हैं, मगर गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको वहाँ कम पैसा पड़ेगा वहाँ पर स्टोरेज करने का, जो हमारे मेवा आपको जैस्मीन बताऊं कि हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं यहाँ अनंतनाग के, सजाद हकीम। सजाद साहब, ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो ये बजट जो है क्या माने रखता है आम लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये पीपल फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको जा रहे हैं। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। बिल्कुल, और एएवाई परिवार के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है, यानी कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। परिवार को साल में 3 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है एएवाई परिवारों के लिए। अनाथ बच्चों को 4000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में किया है। गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। और सीधे रुक कर लेते हैं लाल चौक का सरोज, न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। सरोज, आम जनता से जुड़ा हुआ पूरा बजट गरीब तबके का ख्याल रखा है। MSME सेक्टर को बढ़ावा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात है जो इस बजट में छूटी हो? और सबसे बड़ी बात यह कि सरोज, युवाओं को भी टारगेट किया है। युवाओं के लिए 23,000, यानी पढ़े लिखे जो युवा हैं, 23,000 जो असामियां हैं, सरकारी नौकरी खाली है, साल भर के अंदर उसको भरने की बात की गई है। सरोज, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी एक तरीके से पुश किया गया है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने सामने रखी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बताते चले, साथ ही साथ आपने एएवाई के हवाले से बात की है, डेली वेजेस के हवाले से बात किया। ओवरऑल आप देखिए थ्रस्ट जो है इस बार वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे है। 8 ऐसे बड़े क्लस्टर्स आएंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। एक मटन का क्लस्टर है जो श्रीनगर को मिलेगा, वही चेरी का क्लस्टर है गांदरबल को मिलेगा, फिशरीज का क्लस्टर है वो गांदरबल को मिलेगा, वही जम्मू खिते में जैसे बासमती राइस माना जाता है, जम्मू खिते में वो क्लस्टर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के हवाले से भी बात करें तो कारखानदार स्कीम जो है उसको इस बार प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो ये आर्टिसंस है इनको कहीं ना कहीं डिपेंड ना रहना पड़े शॉपकीपर्स पे, ये अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। साथ ही साथ इनको कुछ कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसे हम एक क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो इन आर्टिसंस को दिया जाएगा, जिस पर ये परचेजिंग कर सकते हैं। अगर इनको थ्रेड खरीदना है शॉल्स के लिए, सुइयां खरीदनी है या चिजल खरीदना है, तो उसके लिए इनको एक रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपने एएवाई की बात की है, यहां पर एएवाई को पिछले बजट में ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इस बार उन्होंने फिर से वादा किया है। एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल सही कहा आपने कि 4000 रुपए तक इनको कोचिंग की फीस दी जाएगी, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोचिंग फ्री रहेगी और वही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री रहेगी। लेकिन अब यह देखना है, जब तक कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशरीज कौन है। एएवाई के जुमरे में कितनी परसेंटेज आती है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की, और कितने लोग जो है वो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे जो आज ये पॉलिसीज या स्कीम सामने रखी गई है। और गैस सिलेंडर का भी ऐलान किया है सरोज की एएवाई जो परिवार होंगे, जो खानदान होंगे, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
बट विशाल यही देखिए ना, अब जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जो 2026 में अभी होने वाला है, तब तक आप किस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे? जैसे खुद एनसी गवर्नमेंट कहती है कि फ्री मीटर्स तभी लग पाएंगे जब तक एक बार पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता, तब जाके पता लग पाएगा कि कितने लोग डिजर्विंग है, कितने लोग एएवाई के जुमरे में आते हैं, बीपीएल के जुमरे में आते हैं या अब पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसलिए इस वक्त इस बजट पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ग्राउंड पे, वो देखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स के हवाले से बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, डेली वेजर्स की तो रेगुलराइजेशन की बात बोल दी है। 72,000 रेगुलर डेली वेजर्स है, जैसा अभी जैस्मिन भी कह रही थी, करीबन 29 डिपार्टमेंट से है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन होगी, ये एक साथ इन 72,000 डेली वेजर्स की नहीं होगी। इनसे एक मीटिंग बुलवाई गई थी जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से एसोसिएशन मिली थी ईजैक की, जहां पर कहा गया कि हर साल 10 से 12,000, मैं आपको फिर से जिम्मेदारी से बताऊं कि हर साल 10 से 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ना कि इसी साल पूरे 72,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सरोज, यानी आपने दो बातें, डेली वेजर्स का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसको लेकर एजिटेशन भी बहुत ज्यादा हुई है पास्ट में, और इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, रेगुलराइजेशन उनकी कैसे होगी, ये सरकार तय करेगी, तैयार करेगी इसका खाका, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। दूसरी बात आपने कही कास्ट सेंसस की, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला इशू है और इसी के अंडर ये जो सारी घोषणाएं की हैं, इनकी इंप्लीमेंटेशन आएगी। जब तक कास्ट सेंसस पूरी तरह से नहीं हो जाता, तब तक एएवाई का क्राइटेरिया क्या होगा, किन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये इंप्लीमेंटेशन को लेकर एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ओवरऑल इस बजट को देखा जाए तो रादर देन फाइंडिंग लूप होल्स, हम इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें देख पा रहे हैं। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया था कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसी की एक तरह से एक्सटेंशन के तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर है जम्मू कश्मीर। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, लेकिन एज कंपेयर टू दोज स्टेट, विशाल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर जम्मू कश्मीर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, सीजनल इंश्योरेंस का मैं जिक्र कर रही थी फार्मर्स के लिए, ये वो तमाम इस तरह की घोषणाएं हैं, पोल्ट्री फार्म्स का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़ी हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, यही 3-4 इंडस्ट्रीज है जो बैकबोन रहती है यहाँ पर। नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बात हुई है। देखिए, लेवेंडर ऑयल जम्मू रीजन में होता है, माफ कीजिएगा, लेवेंडर जो होती है उसकी खेती जम्मू रीजन में होती है, उसकी एक्सट्रैक्शन जो होगी ऑयल्स की, फिर उनमें एसेंशियल ऑयल्स बनेंगे, उसके हवाले से भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के सामने लाई गई है। अब ये देखना होगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। देखिए, 200 नई ई बसेस भी यहाँ पर आएंगे, हालांकि इस यहाँ पर ई बसेस चल रही है, 200 और नई ई बसेस आएंगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट बसेस है जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करते हैं, उसमें भी ख्वातीन जो है उनके लिए इस बार उनको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए, यानी कि वो मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी कई सारी स्कीम्स है जो लोगों की बहबूदी के लिए है। बट अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है इनका कैसा सपोर्ट रहेगा। ये जो आज ये बजट सामने आया हुआ है, इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे पूछें, क्योंकि वो कॉमर्स सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के यूथ को ही उसमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं। जहूर जी, देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 23,000 नौकरियों की बात कही जा रही है और उसके साथ डेलीवेजर्स की बात कही जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की, चाहे हमारे साथ फहमीदा अख्तर हैं, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे साथ बशीर अहमद हैं और ये एमएसएमई के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, या चेयरमैन है फेडरेशन, यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन। सजाद साहब, ये बताइए कि क्या लाभ हो सकता है जो 23
23,000 नौकरियां चूंकि अब आने वाले वक्त में, और उसके साथ साथ जो डेली वेजर्स के परमानेंट का मसला है, तो क्या कहीं ना कहीं इससे एक खला पूरा हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी साबित हो सकती है। अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हो सकता है कि आइंदा वाले आज अगर 23,000 इस बजट में अगर 23,000 नौकरियों क्या रखा है, हो सकता है कि इंशाल्लाह रहमान आइंदा हम ये 50,000 होगा या 1 लाख के करीब होगा। कम से कम इनिशिएटिव तो लेना है सबसे। उसके बाद में जो उन्होंने आज जो बोला है कि जो डेली वेजर्स है उनके लिए भी जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो भी एक खुश आईवाई के तहत जुमरे में आने वाले 3 सिलेंडर्स की बात कही गई है, और भी कुछ जो है ऐलानात मुतवक्का है। देखिए, मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। या हमको ये जो हमारे एएवाई जो हमारे है वो हमारे बीपीएल से भी निचले करके है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। अगर मिडिल क्लास के लिए हमने एक सिलेंडर रखा है, उनके लिए भी 2 सिलेंडर रखने हैं, वो हमारी गुजारिश रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो यहाँ पे मेन है वो ये है कि हमारे पास अभी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। ये बहुत ही मेन मकसद है। एजुकेशन पॉलिसी में आप देख लीजिए जितने हमारे बेरोजगार है जो पढ़े लिखे हैं, डबल पीएचडी करके है, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में पिछले 5 साल से 8 साल से, अभी वो ओवरेज आने की मतलब वहां पे जी उनके लिए कुछ ना कुछ को सोचना है। अगर कोई हमारा यूथ है वो 5 साल से 8 साल से। जैस्मिन, अगर आप ओवरऑल बात करें इस बजट की तो कहीं ना कहीं पीपल फ्रेंडली बजट है, लेकिन कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सजाद साहब अभी बोल रहे थे, या बशीर साहब भी, या फहमिदा जी भी बोल रही थी कि कुछ और चीजें भी होनी चाहिए इस बजट में, ताकि जरूर एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो ये अरमान हमेशा कम ही रह जाएंगे। फिलहाल मैं रुख करूंगा याकूब ढुन्नो का, जो हाउस बोट ओनर हैं। याकूब साहब, बजट में सब कुछ तो नहीं मिल सकता, लेकिन कितना मिला, कितने मुत्तफिक है आप आज के बजट से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को दावत दी आज के इस बजट में दोबारा। लास्ट ईयर भी हम इसी प्रोग्राम में थे और आज भी जिंदा हूं तो तभी आपके इस स्टेडियम में हाजिर हूं जनाब। आपने मेरे मुंह से एक ये जो गालिब साहब का शेर है, कब से मैंने इसकी प्रैक्टिस करके रखी थी कि मैं आपके स्टेडियम में मैं पूरे हिंदुस्तान को ये सुना दूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा, क्योंकि आज जो है ना 1947 से लेके अभी तक जो हमारे सीनों में वजन रखा हुआ है, जो हमारे सीनों में अरमान रखे हुए हैं, वो मैं आज न्यूज़ 18 के इस स्टेडियम में पूरा निकालना चाहता हूं, पूरी बदास निकालना चाहता हूं जनाब, अगर आपका मुझे इजाजत हो तो याकूब साहब बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपके अशार तो मैंने सुन लिए जो आपने गालिब को कोट किया है, और अच्छा हुआ मैंने शायर का नाम नहीं बता दिया, आपने नाम बता दिया। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर कितना रिच है कल्चरली और लिटरली, अदब में भी कितना रिच है, तहजीब में भी कितना रिच है। अब बाकी चीजें तो है ही, खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती, सब कुछ मालामाल है जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए होते हैं, बजट चाहिए होता है। जी। तो मैं ये चाहूंगा कि हाउस बोट ओनर की हैसियत से आप ये बताएं कि क्या उम्मीदें हाउस बोट वालों ने लगा रखी थी, और इस बजट के ऐलान से किस हद तक उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं? बिल्कुल जनाब, देखिए पहले तो मरकजी बजट निकला तो वो तो टोटल फेलियर हुआ। हमारे जो इश्यूज थे वहां पे उस बजट में हमारे जो भी ग्रीवेंस थे, जो भी हमारे मुतालबात थे, जो भी हमारे जो बेसिक हमारे डिमांड्स थे, वहां पे वो पॉलिसी या वैसा कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। दूसरा ऐलान जो आज हुआ है जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली में, तो जो ये बजट है इसने तो हमें पूरा ही नाउम्मीद कर दिया, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 मुतालबात थे जो हम कई दहाइयों से इसको रिपीट लगा के रखे हुए हैं। जनाब, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो हमें वादा किया गया था कि हम सब्सिडाइज रेट्स पे हाउस बोट को टिम्बर इशू करेंगे, सर्कुलर से निकले लेकिन आज तक टिम्बर हासिल नहीं हुआ किसी भी एक हाउस बोट वाले को। दूसरा, जो कोविड-19, उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, फिर पहलगाम का सिनेरियो, इन सालों में जो हमें बिजली की जो बिल्स है
वो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, तो वो वेव ऑफ यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तीसरा जो हमारा जो बेसिक मुतालबा है वो है रिप्यूटेशन स्कीम ऑफ हाउस बोट ऑनर्स। जो हमारे हाउस बोट मालिकान है जो कुछ करना चाहते हैं इस धंधे को, उनको रिप्यूटेशन स्कीम वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। सॉफ्ट लोन पैकेज 9 महीने हम बैठे रहे हैं सर, ये हम जानते हैं कि हम कैसे इस दुनिया में इस वक्त जीवित है। 9 महीने जी ठीक है, यानी तो इनका वो नहीं मिला। और दूसरी बात, लास्ट वाला रिवाइवल पॉलिसी फॉर हाउस बोट इंडस्ट्री, उमर साहब ने कहा कि हम इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। क्या वो असेंबली में JKUT असेंबली में ये ऐलान करेंगे कि हाउस बोट इंडस्ट्री है, ये जो हाउस बोट कम्युनिटी है ये एक इंडस्ट्री है, ताकि हम नेक्स्ट बजट में इंसेंटिव्स और पॉलिसीज के हकदार हो। जनाब बिल्कुल ठीक है सरोज, क्योंकि याकूब साहब की इतनी सारी ग्रीवेंसेस हैं, इतने सारी इनकी शिकायतें हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस बीच हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सरोज इफ यू कैन टेल मी, मुख्यमंत्री ने जैसे आप कह रहे थे ना कि इम्प्लीमेंटेशन इन तमाम जो घोषणाएं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि मैं एक चीज यहां पर रिलेट कर पा रही हूं, याकूब साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि वी आर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और जिन 9 महीनों में खाली बैठने का जिक्र याकूब साहब कर रहे हैं वो डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनेट है उनकी बात से, और उनमें अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनती है तो क्या टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर से तो टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और स्पेशली अब आप देखिए कि कहा जा रहा है, आज ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो ट्राइबल एरियाज यानी फार फ्लंग एरियाज हैं, आप पूंछ राजौरी की बात कर लीजिए, कश्मीर में आप बात कर लीजिए केरन जैसी जगह की, या यहां से आप गुरेज जैसी जगह देख लीजिए, तो जिस तरह से आपने देखा भी होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी जिक्र किया था, जो माउंटेन ट्रेल्स है इनको डेवलप करना है, उसी के हवाले से आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी, हालांकि उन्होंने माउंटेन ट्रेल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का, और उसको वहां पे डेवलप किया जा सकता है। और ये ट्राइबल के जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम रहते हैं वो भी बड़े कमाल रहते हैं, जैस्मिन अपने देखने वालों को भी कहे, एकदम मुख्तलिफ होते हैं वो। जम्मू और कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है हैंडलूम होता है, तो उस पर भी एक थ्रस्ट दिया गया है कि ट्राइबल एरियाज जो है या ट्राइबल जो इनके ओल्ड कमोडिटीज रही है उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए, उनको किस तरह से पुश किया जाए। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाइसन आतंकी हमले के बाद किस तरह से एक बहुत बड़ा धचका लगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। वही अगर हम हाउस बोट एसोसिएशन ओनर्स की भी बात कर लीजिए, देखिए शायद याकूब दोनों ने आपको ये कहा या नहीं कहा, वो मांग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आया है कि और नए हाउस बोट सब बनने चाहिए यहां पर। कुल मिलाकर करीबन 940 हाउस बोट से अगर हम निगीन, जहलम और डल लेक की बात करें तो अभी हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहे हैं नए हाउस